वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग सुबह से यही काम कर रहे हैं यस जी सर। सर। और मैंने ये भी सुना कि बच्चे पीछे रो रहे हैं। बिल्कुल सर। आई यस डोंट सर। माइंड आई डोंट सर माइंड बच्चे बड़े दोनों रो रहे हैं। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मुझे बच्चों का रोना बुरा नहीं लगता। सर बड़े भी रो रहे ये हैं। ये जो है ना, मेरा ख्याल है ये एक अब चैलेंज है मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी कि सारा दिन इस सेशन में गुजारा। और मेरा भी आज इससे पहले वो मंथली वेबिनार था, वो यूजली पाकिस्तान के 11 बजे टाइम से 11 बजे से डेढ़ 2 घंटे का सेशन होता है, वो भी आज था। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग रिसीविंग एंड पर हैं और सुबह से हैं, तो इट वुड बी रियली ए चैलेंज, बट इंशाल्लाह वी विल बोथ, मैं भी और आप भी मिलकर कोशिश करेंगे कि ये सेशन जो है वो यूजफुल हो। दूसरा इंशाल्लाह ये सर। कि इस जो भी हम बात करने जा रहे हैं, इसको आप यूनी डायरेक्शनल ना रखें। जहां भी आपको लगे कि कोई चीज जो है वो क्लियर करने वाली है तो फौरन रोक के आप क्लियर कर लीजिए। इसको हम ज्यादा लेट्स मेक अ काइंड ऑफ डिस्कशन रादर देन वन वे काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। सेशन काफी लंबा है और हमने चीजें भी काफी सारी कवर करनी है। इन बिटवीन जब भी आप समझें कि आपको ब्रेक की जरूरत है तो वी कैन टेक अ ब्रेक। तो बिल्कुल फील फ्री, कोई कंपल्शन नहीं है। राइट। मलेशिया का टाइम पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है, तो हम इस वक्त यहाँ पे इवनिंग का टाइम है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेशन। और वो हम किस पे करना चाह रहे हैं? लेट मी चेक वो जो ये स्लाइड आपको नजर आ रही है? यस सर। राइट, और आवाज भी आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, आप जस्ट क्विकली एक आइडिया दीजिए कि आप लोग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सेशन से कुछ फेमिलियर हैं? कुरतुलैन, जी सर। आप फेमिलियर हैं? जी सर। अब जैसे फैकल्टी हमारे पास थोड़ी होती है और हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ फैकल्टी का अच्छा इंटरेक्शन और अच्छी लर्निंग एक्टिविटी करने के लिए टीबीएल पीबीएल अच्छी एक्टिविटीज होती है। इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट भी करता है। तो हम पीबीएल तो अब जैसे मेरा क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो हम पीबीएल्स कोशिश करते हैं कि उनको केस बेस कराएं, मेनली सीबीएल्स करा रहे होते हैं। सही तो है, जी सही। तो लाराइब कमर, आप यस सर। फेमिलियर हैं पीबीएल से? जी सर। राइट। So I understand कि अगर सब नहीं तो majority of participants are familiar with PBL. That would be very helpful हमारे इस सेशन में कि अगर थोड़ा सा previous experience है। जी सर। तो पहला सेशन जो है बेसिकली हम जैसे आप स्क्रीन पे देख रही हैं TBL और PBL पे है। और the learning outcomes, the participants would be able to explain the underlying principles of team-based learning approach.
यहाँ पे TBL टीम बेस्ड है. I'm not talking about task based, वो हम बाद में बात करेंगे. तो यहाँ पे TBL is team based learning. So explain the underlying principles of TBL approach in teaching learning sessions. Describe the process of conduct of a TBL session. Describe the process of conduct of a PBL session. And compare the conduct of TBL session with the PBL session. And of course, then conduct TBL and PBL session effectively and efficiently. So these are our goals, our aims, our learning outcomes, which we wish to achieve in this session. Let's talk about the concept of team-based learning session, and that's one statement, very powerful statement. Classroom time needs to be used for solving problems and not just transmittal of information. ये एक basic concept है जो team-based learning का के basis बनाता है कि classroom का मकसद सिर्फ information transmission नहीं है, बल्कि इसको हमने active करना है और इसमें problem solving की तरफ तवज्जो देनी है. ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये बस एक दो स्लाइड्स हैं कॉन्सेप्ट्स की, उसके बाद ये काफी इजी हो जाएगा. ये है एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग. ये इम्पोर्टेंट है, हम ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लें तो हमें TBL की काफी अच्छी समझ आ जाएगी. ये कॉन्सेप्ट ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, वाइगोट्स्की, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था. एंड इसकी एक्सप्लेनेशन यूं है कि कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ाना चाहें उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हिस्सा ये है जो इजी है और मे बी स्टूडेंट्स को उसको उनको पता हो, जिसको हमने यहाँ कहा है व्हाट आई कैन लर्न ऑन माय ओन. एक दूसरा हिस्सा है जो स्टूडेंट्स ने सीखना है लेकिन दे नीड हेल्प फॉर दैट, और ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. और उसी सब्जेक्ट का एक तीसरा हिस्सा है जो उस वक्त हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो उनके लेवल से ज्यादा है, तो वो बियॉन्ड देयर रीच. तो ये जो कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ये कहता है कि हमें स्टूडेंट्स की हेल्प इस एरिया में करनी चाहिए. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो स्टूडेंट्स को पहले से आता है अगर वो रिपीट करेंगे तो बोरिंग होगा, स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा. लेकिन ये वो हिस्सा है जो स्टूडेंट्स को नहीं आता और उनको उसके सीखने के लिए हेल्प की जरूरत है, तो ये एरिया है जिस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए. और जो हिस्सा उस लेवल से बियॉन्ड है उसकी तो उस वक्त हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि किसी भी सब्जेक्ट का वो हिस्सा जो स्टूडेंट्स सीखने के लिए उनको लेक्चरर की मदद की जरूरत होती है, लेक्चरर की गाइडेंस की जरूरत होती है. ये एक कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग का. Scaffolding is a process in which teachers model or demonstrate how to solve a problem and then step back, offering support as needed. ये बहुत important हिस्सा है, offering support as needed. आप स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद उनको करने देते हैं. आप सिंपल एग्जांपल लें, आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे करना है या पैल्पेशन कैसे करनी है, और उसके बाद आप उनको करने देते हैं और आप एक साइड पे खड़े होके देखते हैं और आप वहां हेल्प करते हैं जहां उनको हेल्प की जरूरत होती है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, कि स्टूडेंट्स की वहां हेल्प करें जहां उनको जरूरत है, जहां उनको जरूरत नहीं है लेट देम डू इट. So the theory is that when students are given the support they need while learning something new, they stand a better chance of using the knowledge independently. इसी का दूसरा हिस्सा, scaffolding refers to a variety of instructional techniques.
used to move students progressively towards stronger understanding and ultimately greater independence in learning process. So अगर हम scaffolding पे अमल करें तो it would lead to greater independence कि students जो है independent learning वो बेहतर हो जाएगी. Right? So ये दो concept हैं, zone of proximal development और scaffolding, और ये basis बनाते हैं team based learning का. So team based learning of course is in an active learning, a small group instructional strategy that provides students with opportunities to learn a concept and apply the newly learned conceptual knowledge through a sequence of activities that include individual work, group or teamwork, and immediate feedback. ये एक लंबी statement है, एक apparently एक complex statement है, और मेरा ख्याल है अगर हम इसको break करें sentences में तो we will be able to learn better. So ये अगर हम ये कहें कि TBL is an active learning process, a small group instructional strategy. It provides students with opportunities to learn a new concept, और important part ये है कि सिर्फ learning नहीं है, and apply the newly learned conceptual knowledge through a sequence of activities. हम इन activities की detail में जाएंगे, that include individual work, group or team work, and immediate feedback. तो ये है उस statement का breakdown. और as we said, the initial statement that the classroom time must be used to solve the problems rather than transmittal of information. So ये जो sequence of activities है, ये उस requirement को fulfill करता है. So TBL is specifically characterized by three components. First, individual, advanced, student and lecturer preparation. इसके लिए कुछ students को prepare करना होता है, कुछ lecturer को prepare करना होता है, and we'll go into the detail in a short while. Second component है individual and group readiness assurance test. कि इसमें students as individual or students as a group तैयार हो जाते हैं, they are ready for the next step, and that next step is team decision making and application of knowledge concepts, or TAPP. So ये तीन components हैं किसी भी team based learning के, and we will see that how we go through these components. इसी को अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसके तीन phases हैं. Phase 1 में प्री क्लास इंडिविजुअल स्टडी है जो स्टूडेंट्स करते हैं और लेक्चरर को कुछ प्रिपरेशन करनी होती है. फिर ये क्लासरूम का फेज है, सेकंड फेज, जिसमें इंडिविजुअल रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट होता है, ग्रुप रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स की अपील होती है और इंस्ट्रक्टर की फीडबैक होती है. और तीसरा फेज भी क्लासरूम में ही है, लेकिन फेज 2 में स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है ताकि वो फेज 3 में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई कर सके. So sequence of activities for a TBL session. Step 1, advance assignment. So students को कोई एक advance assignment दी जा सकती है और ये दी जाती है, और ये इसकी बहुत सी चीजें जो हैं इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. आपको एक चैप्टर दे सकते हैं, आप आर्टिकल दे सकते हैं, और इवन आप ये कहते हैं कि पिछले 5 लेक्चर्स जो हमने लिए हैं इस सब्जेक्ट के, लेट्स से फिजियोलॉजी के या बायोकेमिस्ट्री के, ये TBL उन 5 लेक्चर्स पे बेस करेगा. तो ये स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट को जो असाइनमेंट मिलती है उसके लर्निंग आउटकम भी साथ मिलते हैं. तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि इस असाइनमेंट में उन्होंने क्या करना है. और दूसरा लेक्चरर के लिए है कि लेक्चरर को 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं. पहला सेट जो है वो अगर आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी पे जाएं तो वो C2 लेवल पे, कंप्रीहेंशन लेवल पे, जिसको हम सेट 1 कहेंगे, और इसमें
मकसद जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करना होता है वो कॉन्सेप्ट कंप्रीहेंड करने में, और दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से C3 से C5 तक, और जिसमें एप्लीकेशन का जो एलिमेंट है वो टेस्ट किया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन और लेक्चरर की प्रेपरेशन। सेकंड स्टेप जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप एंड ग्रुप लीडर्स, राइट। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम स्मॉल ग्रुप बनाने चाहिए हमें। थर्ड स्टेप है इंडिविजुअल रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट। फोर्थ स्टेप है ग्रुप रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट। फिफ्थ स्टेप है डिस्प्ले ऑफ ग्रुप रेडीनेस एश्योरेंस रिजल्ट्स। और सिक्स्थ स्टेप है टीचर क्लैरिफिकेशन रिव्यू और जी readiness group readiness assurance test को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और फिर सेवंथ है टीम एप्लीकेशन टेस्ट। एट्थ स्टेप है डिस्प्ले ऑफ टीम एप्लीकेशन रिजल्ट्स। नाइन्थ स्टेप जो है डिस्कशन इन आंसर्स की। और 10th स्टेप है रैप अप सेशन, 11 debriefing and 12 appealing, where we will be going through each step one by one. मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ कोई? नो सर, ठीक है। नो सर। थोड़ा स्लो है सर। ये थोड़ा सा मैं इसमें जल्दी से गुजरा हूँ क्योंकि हमें ये स्टेप्स जो हैं बाद में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप जो है एडवांस असाइनमेंट और प्रिपरेशन। जैसे थोड़ा सा मैंने पहले बताया, स्टूडेंट्स रिसीव अ लिस्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, for example a topic along with learning outcomes and learning materials. Learning activities may include readings, watching videos, lab work, tutorials, lectures. So this could be many different things. Students study material in preparation for the TBL session, or staff jo hai, they have to plan the organization of the session and the construction of valid and reliable questions. जैसे मैंने पहले कहा C2 लेवल के उसमें usually हम single best answer questions use करते हैं. You can prepare 10 to 20 BAQs, and then second set जो है जो application of knowledge का है उसमें usually हम EMQ और extended matching questions use करते हैं. वो 3 to 5 in number हो सकते हैं. और इसके साथ टीचर हैज टू प्रिपेयर टेबल्स फॉर एंटरिंग द स्टूडेंट्स आंसर्स अलोंग विद मॉडल आंसर्स, अगर आप वो मैनुअली करना चाह रहे हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेबल. सो इस साइड पे ये टीम्स हैं, टीम 1 2 3 4 5. इस साइड पे ये क्वेश्चंस हैं और ये मॉडल आंसर है. तो ये टेबल जो है अगर आप मैनुअल करना चाह रहे हैं तो ये यूज होगा जो है ग्रुप रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट के लिए, और एज वेल एज टीम एप्लीकेशन जो है, ये दोनों के लिए ये एक टेबल यूज हो सकता है. दूसरा स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स. इसमें कोशिश ये करें कि स्टूडेंट्स खुद को ग्रुप ना बनाएं, वरना वो बहुत बायस्ड ग्रुप बन जाता है. मे भी सारे अच्छे स्टूडेंट एक ग्रुप में हो जाए, जो थोड़े से कम परफॉर्म करते हैं वो एक में हो जाएं. तो कोशिश ये करें कि उन स्टूडेंट्स के बनाने के बजाय आप खुद ग्रुप्स बनाएं, टू डिस्करेज reasons for group tendencies other than academic advantages. Ensure that each group has as much diversity as possible. Usme make group session and make the grouping session transparent. Students should never wonder how or why they are assigned to a particular group. आप students को बताएं कि हम ये जो है basis use कर रहे हैं groups बनाने का. उसमें high achievers और low achievers को mix up कर सकते हैं, जिस तरह top 5 और bottom 5 का mix कर लें, gender mix कर लें.
रेस हमारे यहाँ मलेशिया में ये एक इशू है, 3 रेसेस हैं तो उनका प्रॉपर मिक्स करें। डिसिप्लिन जो है वो मिक्स कर लें। अगर आप फॉर एग्जांपल इंटर प्रोफेशनल सेशंस कर रहे हैं तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो हैं उनका मिक्स कर लें। मेंटेन द ग्रुप फॉर अ टर्म और सेमेस्टर। तो एक दफा जब आप एक ग्रुप बना लें तो इसको आप कुछ अरसे के लिए मेंटेन करें। दैट वुड हेल्प in better group dynamics. Let students choose their representative or leader or spokesperson and can be different students for different sessions. The third step is individual readiness assurance test. Each individual student completes a set of 10 to 20 single best answers that focus on understanding of concepts they need to master in order to be able to solve the team application problems. So ये जैसे मैंने कहा कि comprehension का या first set जो questions का आपने बनाया है वो हर student जो है individually करेगा। और जब students ये कर लें तो you collect those answers back from the students. और अगर आप चाहें कि आपने इस सेशन को यूज करना है एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट तो ये जो आप स्टूडेंट से आंसर शीट्स कलेक्ट करेंगे यू कैन यूज इट फॉर दैट पर्पस। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आप उसको यूज करें क्योंकि ये फिर स्टूडेंट्स के लिए एक इंसेंटिव हो जाता है कि वो तैयार होके आएंगे, पढ़ के आएंगे। स्टेप 4, अब वही the same set of questions that each student has answered individually, now the group must answer them through a consensus building discussion. So this is the stage where the group of students, the 5-6 students जो group में हैं, now they would discuss each component or each statement of question or each question, or they will come to a consensus, and this is the stage where peer learning takes place. Student discuss करते हैं एक दूसरे और ultimately वो एक common answer पर पहुंचते हैं. The next step is fill the answers in the table for each group and compare with the model answers. So जो table मैंने जब सारे groups ने कर लिया, now आप उनके आंसर उस टेबल में डालेंगे जो मैंने पहले दिखाया था आपको। इसमें और मेथड्स भी हैं, अगर आप मैनुअल नहीं करना चाहते तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी हैं, स्क्रैच कार्ड्स भी हैं, लेकिन जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेथड में वो आप हैंडफोन में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्लिकर्स के तौर पे, लेकिन उसमें फिर ये नहीं पता होता कि वो रेस्पोंडेंट कौन है, वो एनोनिमस बन जाता है। ये एग्जांपल है कि वो जो टेबल है कि ये यहाँ पे टीम्स हैं या ग्रुप्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये नीचे मॉडल आंसर है और ये हर टीम के आंसर्स हैं। किसी में तो बिल्कुल ठीक है, कंसेंसस है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में डिफरेंस है, राइट? तो इस तरह की आपको एक टेबल बनेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है और कौन से क्वेश्चंस में उनको डिफिकल्टी आ रही है और उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। So 6th step is students are given clarification by the lecturer on the concepts they have been struggling with during the group readiness assurance test. अब important point ये है कि यहाँ पे ये clarification lecturers ने देनी है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ज्यादा एंगेज नहीं करेंगे क्योंकि यू नीड टू सेव टाइम फॉर जो है अगले सेशन के लिए। जी एक डॉक्टर कुरतुल्लाह, आप मैंने ये पूछना था, आपने कहा ना कि यहाँ आप स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन देंगे, तो ये टीचर ऑब्जर्व कर रहा होगा कि उनको किन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो उन्होंने गलत आंसर किए उनकी क्लैरिफिकेशन सिर्फ? मैडम आप वो टेबल यूज करेंगे, ये वाला टेबल, ठीक है, और फिर आप जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं वो दोनों की दे रहे हैं, राइट आंसर क्यों राइट है और रॉन्ग आंसर क्यों रॉन्ग है।
ठीक है लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये मेजर कंट्रीब्यूशन लेक्चरर की है रादर देन स्टूडेंट्स जी इस स्टेप पे। जी और इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स के कोई और क्वेश्चंस हैं आप उनका जवाब भी दे देते हैं। स्टूडेंट्स जो अपीलिंग है स्टूडेंट्स की कि वो कहते हैं कि नहीं जी उनका आंसर ज्यादा सही है या आपका क्वेश्चन ठीक नहीं था, तो यू कैन डील विद दैट एट दिस स्टेज। So at the end of clarification review, students should feel confident that they are adequately prepared to solve more complex problems. So basically by end of this session, आपने students को ये तैयार कर लिया है और कि अब अगला जो सेशन है जिसमें जो application of knowledge है वो उसके लिए तैयार हो गए। So that is the main purpose और इसीलिए इसमें ज्यादा responsibility जो है वो lecturer को दी गई है। So next step, which is the team application test. So this is the most important step. Students in teams, वही जो पहले group बने हुए हैं, वही group are presented with a scenario, या जो mainly extended matching question है, that is similar to the type of problems they will be grappling with during their careers. So ये real life scenarios के साथ जो स्टूडेंट्स फेस करेंगे उस पे बेस करके ये एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चंस होंगे। और फिर द 4S प्रिंसिपल इसके लिए यूज करते हैं, विच इज द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। द सिलेक्टेड प्रॉब्लम एंड द एसोसिएटेड क्वेश्चन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक। इसमें माइनर प्रिंट को अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। सेम प्रॉब्लम, एक तो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है और दूसरा सेम प्रॉब्लम, बिकॉज ईच ग्रुप इज डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम, हैंडलिंग द सेम प्रॉब्लम। स्पेसिफिक चॉइस, प्रूव द व्हाई ऑफ अ कॉन्सेप्ट और यूज अ सेट ऑफ डेटा फॉर इंटरप्रिटेशन। मकसद ये है कि यह सवाल ऐसा हो कि जिसमें स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई देयर कॉन्सेप्ट। तो रिकॉल ऑफ नॉलेज नहीं है यहाँ, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। Simultaneous report, once students have finished that, then they of course they have to report। और simultaneous report क्या, या तो ये कार्ड्स पे दें या लिख के दें ताकि स्टूडेंट्स अपना आंसर चेंज ना कर सकें। and then the students are challenged to make interpretation, calculation, prediction, analysis, synthesis, so many things जिसमें application of knowledge होती है। And make a specific choice from a range of options जो हम extended matching questions में देते हैं। Students should never be asked to produce a lengthy answer, क्योंकि ये कोई assignment नहीं है, ये कोई essay नहीं है, ये एक extended matching जो एक form है multiple choice questions। और ये फिर उसी तरह का टेबल जो है आप जिस तरह आपने ग्रुप रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट में बनाया था उसी तरह का ये एक टेबल जो है टीम एप्लीकेशन में हो जाता है। एंड नाउ द मेजर रोल इज प्लेड बाय द स्टूडेंट्स एंड नॉट बाय द फैसिलिटेटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है नाउ दे हैव टू हैंडल द सिचुएशन। जबकि ग्रुप रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट में लेक्चरर ने मेनली रोल प्ले किया, बिकॉज वी वांटेड टू सेव टाइम so that students can handle this team application. So major role played by the students, not by the facilitator. Both right and wrong answers are discussed by students among different teams. Answering any queries by the student and by the student with minimum lectures input. Students के अगर कोई question करते हैं तो let other group answer those questions rather than lecturer answering those questions. And the 10th step is summarize the concept. Isme again now is the lecturer's role to summarize the concept and clear the doubts, reinforce the right understanding. Basically, this is a take-home message जो है students के लिए होगा। Step 11 is structured feedback, feedback to peers within the team or
feedback on the role of the team in the learning process. It's not necessary to have this session, this step after every session. You can have maybe once a month or so, because you don't want to every time do this feedback that may not be very productive. Feedback on the whole process, learning experience on our personal role, and debriefing. That's part of the feedback. Question something like that: what is the single most valuable contribution this person makes to your team, and what is the single most important thing this person could do to more effectively help your team? So basically, the purpose of this debriefing and feedback is to improve the work of the team, because the same team is going to be there for the whole term or for the whole semester. And appeal, I have already mentioned that a team may request the lecturer to consider an alternate answer to the designated as the best. And the team must either provide a clear and usable rewrite of the question if they think it was a poorly worded. Agar team समझती है कि question clear नहीं था, तो they should give their suggestion. और team अगर समझती है कि जो lecturer ने best answer कहा है वो best नहीं है, so they should give their answer but with references. Or agar, if students are right, then they are given credit for that. Or lecturer shouldn't take long time to come back to the students and give the final decision. So that is the process of TBL. And that's quickly summarizing the events: pre-reading by students, preparation of 2 sets of questions by the teachers. Students answer first set of questions individually. Students discuss the first set of questions among themselves and answer the questions as a group. Students and teacher discuss the first set of questions and answers. Then students are given second set of questions. Students discuss among themselves and answer second set of questions as a group. And the second set of questions and answers are discussed among students and the teacher. So this is briefly the summary of events which take place during a team-based learning session. Some practical tips: explain the answer to question of readiness assurance test rather than asking students. As I mentioned earlier, try to the lecturer should play a major role in this, save time for important tasks. Second, monitor the student discussion carefully. Do not lose the track. Unnecessary lengthy discussion brings boredom. So you need to control so that students don't keep on repeating the same argument, or they are distracting from the main focus. Use scenario as real as possible for extended matching questions. Address important questions, no minor print. Do not forget to wrap up the session smartly. Select the students randomly to speak for their team. Although there is a team leader and our spokesperson, but you can also ask other students. Normally, what I do is I keep a list of students with me, their attendance sheets, so I can pick up the names from the attendance sheet and sometimes may ask other student other than the spokesperson to answer the question. Make a rule that anyone who speaks to the whole class must stand up or use a microphone, because usually students have a tendency to answer to the lecturer, but here they should be addressing the whole class, not the lecturer. Right? Go for quality of questions, not quantity. You do not need to cover all the content. If the questions are well constructed, students would be sort of forced to read the whole content.
trust the process. If you design questions that really make students think and struggle with making a decision about something significant, they will master the content and key concepts. Right, so that was the concept and the process of team-based learning. Any questions from any सर participant? आपने इसमें पीयर लर्निंग की बात की थी कि ये इसमें पीयर लर्निंग हो रही है। जी ये पीयर लर्निंग और पीयर असिस्टेड लर्निंग एक ही बात हुई? जी, एक ही बात तो इसका because मतलब है कि PBL TBL का एक छोटा पार्ट है। आप देखिए, जो peer assisted learning या peer learning is a component of team based learning, and that is one of the strength कि especially जब group discussion होती है तो जो students हैं एक दूसरे से discuss करते हैं और before they come to a common consensus they have to discuss with each other. जी, any other question? लगता है थक गए। May I talk, sir? जी सर ये जो आपने सारा बताया है इसमें तो चीजें आई थिंक मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है मेडिकल एजुकेशन का, बट वी आर मोर कॉम्प्लिकेटिंग बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर जस्ट टू मेक देम गिव देम ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि उनके पास उसका हल हो और वो ये बता सकें। इनफैक्ट ये इसमें मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे टीचर खुद बड़ा डरा हुआ है और वो जगह जगह पे हर स्टेप को नोटिफाई कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, जस्ट इसलिए कि ही और शी हिमसेल्फ इज नॉट अ रोल मॉडल कि लोग उसको देख के ये सारा काम करें। क्योंकि ये लर्निंग तो सर 40,000 साल पहले से शुरू हुई है, जब से इंसान बना है। हमने सिर्फ इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इसको और आसान हम जो पीयर लर्निंग है दैट इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट। इसके जो स्टेप आपने 10-12 कर दिए ये तो कभी भी हमें नहीं याद होंगे सर। आपने याद नहीं करने सर, आपने याद नहीं करने, आपने करने हैं। और वो याद होंगे तो करेंगे ना सर। नहीं, ये बहुत सिंपल है सर नदीम, ये एक्टिव लर्निंग का एक तरीका है। इसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, स्टूडेंट खुद पढ़ के आएंगे, फिर वो एक इंडिविजुअल टेस्ट देंगे, फिर वो ग्रुप देंगे, तो इससे उनकी रेडीनेस भी ज्यादा होगी, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, टीम वर्क प्रमोट होगा और वो एक अपनी चीजों पे रिफ्लेक्ट भी करेंगे। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। नहीं सर ने वैसे अच्छा कहा है कि if you can complicate the things, why to make them easy? सर मैं ये सेशन करता हूँ और एग्जैक्टली यही कहा है सर, यू आर राइट। मैं आपके वर्ड्स को ही रिपीट कर रहा था। जी जज़ाकल्लाह सर। हाँ, जो कुछ आपने कहा है, मैं ये सेशन करता हूँ और बिलीव मी ये सच एन इंजॉयबल सेशन होते हैं। यूजुअली 2-2.5 घंटे का ये सेशन होता है और लगता है कि एक ग्रुप वर्क हो रहा है, एक एक्टिविटी हो रही है। एंड जब मैंने पहली दफा ये सेशन अपने इंस्टीट्यूशन में किया था तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो है बाकी लेक्चरर्स के पास गए कि सब लोग ये करें। तो ठीक है सर। हाँ, अगर आप एक दफा इसके थ्रू गुजर जाएंगे, ये मे बी मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। ओके सर, ओके। नहीं सर, वी विल ट्राई, वी आर लर्निंग अ लॉट। जो अगर कभी मौका मिला तो अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये टीबीएल कर रहा हुआ तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं ये ऑनलाइन भी करता हूँ। इनफैक्ट ऑनलाइन दैट्स वेरी नाइस सर, मोर लर्निंग विल बी देयर सर इंशाल्लाह। सर टीबीएल कितना फ्रीक्वेंट करना चाहिए? जैसे आपके पास फाइनल ईयर का, जैसे हमारे पास क्लिनिकल बैच आया है और बैच आपके पास 3 वीक्स के लिए आ रहा है, तो आप कितनी उनकी एक्टिविटीज टीबीएल पे करा सकते हैं? क्योंकि इसमें तो फैकल्टी ने भी प्रिपेयर करना और आपने कहा 2.5 घंटे लगने हैं। जी मैडम, इसमें आप जो है ना नंबर की बजाय आप ये देखें कि कौन से सूटेबल टॉपिक्स हैं। पहली बात ये है कि हर चीज जो है वो टीबीएल के थ्रू नहीं पढ़ाई जा सकती। That's why we use multiple methods. So कुछ सेशंस जो हैं जो ज्यादा सूटेबल हैं इसके लिए, टीबीएल के लिए, आप हफ्ते में 1 सेशन रख सकते हैं, हफ्ते में 2 सेशन रख सकते हैं। तो लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि सारी की सारी टीचिंग जो है वो टीबीएल के थ्रू होगी। आप डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, क्योंकि
हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जी। सर इसका जी इसका डिसएडवांटेज क्या है टीबीएल का? इसका डिसएडवांटेज मैं आखिर में इसका जिक्र करूंगा। जी ठीक है। उस पे जो इसके चैलेंजेस हैं जी ठीक है। उसका जी ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो नेक्स्ट जो इसका हिस्सा है इसी सेशन का वो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का, which I'm glad most of you or all of you are familiar with. Very quickly I'll go through this और आखिर में फिर हम कंपेयर कर सकेंगे पीबीएल को और टीबीएल को। So steps before the PBL session. So preparation of a PBL package by a group of academicians, which is the most important step. PBL package banana, or it's a hard work, and it's not possible by one person. It has to be a group of people. Facilitator go through the PBL package. Facilitators meeting. Once facilitators have gone through the PBL package, they should meet, or so that they have a planning and common understanding how they are going to conduct the session. Identification of students groups and their facilitators, and allocation of PBL rooms. So ye steps hain which before the PBL session is conducted. Then the facilitator collects the PBL trigger from the office on the morning or day of the PBL session. Steps during the PBL session, students choose a chairperson and a scribe. Facilitator hands over the trigger to the chairperson for distribution to the participants. Scribe notes important discussion points on the board. Chairperson requests a student to read the trigger. Students clarify the text of the problem, clarification of new terms. I'll show you how they do it. And students identify and list the facts stated, and students define the problem so that everybody understands the problem and identify the learning needs. सर ट्रिगर का मतलब बता दें। जो सिनेरियो आप जो देते हैं स्टूडेंट्स को, जो सिनेरियो देते हैं, because it is supposed to trigger the discussion, तो हम इसको trigger कहते हैं। Students brainstorm to find explanations for the phenomena or facts observed in the problem, and students identify the learning needs. Of course, when they are discussing the phenomena or facts, they would find that there are certain points which they are not aware, so that would become their learning needs, which is gaps in their knowledge. Students work independently or in groups to achieve the learning needs, and group reconvenes to discuss the problem in the light of newly acquired knowledge. और उसके बाद debriefing है। तो ये steps हैं जो commonly एक PBL session में होते हैं। This is the table which students use during the session, or this is done by the scribe. So first they identify the difficult words, and then they find out the meaning of those difficult words. They may use dictionary, or they may use internet, or the students may help each other. And in this process, they might identify learning needs. Please be clear that learning needs may not be common for everybody. Different students may have different learning needs. Then similarly, the new terms which they learn in that scenario are a trigger or explanation, and again, there may be some learning needs. But important is this, the third step, the facts and phenomena or ideas जो उसमें scenario में ये trigger में है, and they try to explain. So they generate a hypothesis, or उसमें they would identify that what is the information required, and that would become their learning needs.
So in this way, the students identify the learning needs, and then of course they would disperse, and they would go and work individually or in groups, and then they come 2 or 3 days later, and then the discussion starts on whatever they have learned based on their learning needs. So that is the process of problem-based learning. सर पीबीएल की ड्यूरेशन भी बता दें, आपने टीबीएल का कहा था कि उसके सेशन में 2.5 घंटे तक लग जाता है। Yeah, the PBL का सेशन यूजुअली जो पहला सेशन है वो 1.5 से 2 घंटे का, और सिमिलरली द सेकंड सेशन इतनी ही ड्यूरेशन का होगा। सो द चैलेंजेस जो आप पूछ रही थी कि PBL में क्या चैलेंजेस हैं। प्री रीडिंग असाइनमेंट बाय द स्टूडेंट्स, सो इसमें हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स तैयार होके हैं। So it's not necessary that every student would do the assignment before coming in. And that's why I was saying to use this as a part of continuous assessment, or the students' individual readiness assurance karte hain. So if students know that their marks are going to be part of the continuous assessment, so that they would make sure that they read and they are ready for the assignment. So this is one challenge that some students, they say, okay, वहाँ peer assisted learning होनी है तो हम अपने दोस्तों से पूछ लेंगे, and they may not read it. So that is one challenge to make students come ready for the session. Preparation of valid and reliable questions, that is again a challenge for lecturer to prepare these questions and maybe need to vet those questions. Coping with number of students, agar student number zyada hai to it may not be possible for one person to handle. So we need to find a strategy how to go about it. And managing the session, pointing out the hidden students, ensuring the participation of students, that's another challenge for a lecturer, to make sure that all the students take part in the discussion. So those were the challenges in TBL, and similarly, there are some challenges in PBL session. Preparation of PBL package is a challenge. It needs a lot of hard work. Training of facilitators, facilitation skills, subject expert versus non-experts, motivation of students, and coping with number of students. So these are the challenges which we face in a PBL session, and of course managing the session, and again to ensure that all the students are participating in the session. These are the PBL package. आप PBL पैकेज बोल रहे थे ना, PBL पैकेज, इसके कंपोनेंट बताएंगे? मेरे ज़हन में था कि ये सिर्फ एक सिनेरियो है जो आपने दिया, जो ट्रिगर था। नहीं मैडम, ये एक डॉक्यूमेंट है जो यूजुअली 25 से 30 पेजेस की होती है। उसमें सिनेरियोज होते हैं, उसमें जो टर्म्स की एक्सप्लेनेशन होती है, डिफिकल्ट वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन होती है, उसमें एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि PBL के लिए ये शर्त नहीं है कि जो फैसिलिटेटर है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो। सो बेसिकली ये जो फैसिलिटेटर्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर दैट PBL सेशन, एंड ऑल द पॉसिबल questions are answers are included in that package. So it's quite extensive work, जो PBL package का. So let me show you the comparison जो है इसमें TBL में और PBL में. I have written here somewhere. Let me check that.
not this one, sorry. Yeah, this one. Now, here is the comparison, okay, PBL versus TBL. So first heading, preparation for the session. PBLs there is no reading material provided to the students. Students come completely blank. They even don't know what is going to be discussed. Whereas in TBL, students are given the material, so they come prepared for that. So that's a major difference between the two. In PBL, no learning outcomes are provided to the students because students need to identify their own learning needs. Whereas in TBL, the learning outcomes are provided, so it is more guided. In PBL, students come unprepared for the session, unaware of what will be the content, whereas in TBL, students come prepared and know what content will be discussed. In PBL, faculty need to prepare a PBL package, whereas in TBL, facilitator need to plan the session and prepare 2 sets of questions, which we have discussed. In PBL, facilitators go through the PBL package and may have a discussion with other facilitators about the conduct and the content of the session, whereas in TBL, facilitator may discuss or may not discuss with other colleagues and may accept their suggestions or not. So this is preparing the session. Then comes to conduct of the session. The group size in PBL is 8 to 10 students, whereas in TBL is relatively small group. In PBL, facilitator is not a subject expert, but in TBL, facilitator must be a subject expert. Right? In PBL, 1 facilitator for each group, whereas in TBL, 1 facilitator for all the groups. So it's just 1 person, whereas here, अगर आपके 6 group हैं तो 6 facilitators होंगे. Multiple PBL rooms required. In TBL, it's only 1 classroom which is required. In PBL, students need to choose a chairperson and a scribe, whereas in TBL, students need to choose a spokesperson. In PBL, facilitator mainly coordinates the session and gives very little input, whereas in TBL, facilitator coordinates the session as well as significant academic input is given by the facilitator. PBL is active involvement of students. Of course, TBL also active involvement of the students. In PBL, students identify their learning needs. In TBL, student needs are provided to the students. In PBL, students require more than 1 session. Students need to study in between the session, whereas in TBL, only 1 session. Typically, no more study required on the topic. So this is conduct of the session, and post-conduct. In PBL, there is a debriefing session. TBL also has a debriefing session. Feedback also in both. And PBL can be used as part of continuous assessment. Similarly, TBL can be used for continuous assessment. And opportunities for appeal are provided in TBL. So this is the comparison, and I hope, yes. सर ये सॉरी ये कंडक्ट ऑफ सेशन में आपने ग्रुप साइज बताया है, तो टीबीएल में आप 6 स्टूडेंट्स का एक टाइम पे टीबीएल करा सकते हैं. 6 का इंडिविजुअल टेस्ट हुआ, फिर हमने उनका ग्रुप बनाना है, तो अब वो 2-2 का ग्रुप बनेगा. नहीं, और फिर जब वो टीम होगी तो वो 6 स्टूडेंट, हाँ 6 का ग्रुप होगा, या जो है 5 या 6 स्टूडेंट्स का. और उनके शुरू में ही हम उनको, चूंकि इसमें TBL में नॉर्मली क्लास में राउंड टेबल्स होते हैं, सो वो शुरू में ही जब बैठते हैं तो एज अ ग्रुप बैठते हैं.
और पहले वो इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं और उनसे हम कहते हैं कि जब वो इंडिविजुअल टेस्ट दे रहे होंगे तो वो डिस्कस नहीं करते, और साथ मतलब आप क्लास में घूम रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि वो हर जिस तरह इन्विजिलेशन कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स खुद कर रहे हैं। तो सर टीबीएल में टीबीएल में एट ए टाइम हम कितने ग्रुप्स का एक आपने कहा फैसिलिटेटर होता है टीबीएल में, हमने TBL कितने ग्रुप्स बना सकते हैं? लेट्स से जो अगर आपकी क्लास लेट्स से 100 स्टूडेंट्स की है, 120 स्टूडेंट्स की है, तो लेट्स से उसमें 20 ग्रुप बन जाएंगे। तो और उसके एक लिए फैसिलिटेटर? हाँ, एक ही फैसिलिटेटर होगा सारी क्लास के लिए। उसमें सिर्फ एक लेक्चरर चाहिए टीबीएल में। लेकिन अगर क्लास आपकी बड़ी है, लेट्स से 200 हो गए, 250 हो गए, तो फिर आपको या तो उसको दो पार्ट्स में करें या फिर 2 फैसिलिटेटर रखें। तो ये एडवांटेज है टीबीएल में कि टीबीएल में जो ये लेस रिसोर्स चाहिए इसमें टीबीएल में। जब उसी लेट्स से अगर 20 ग्रुप हैं तो पीबीएल के लिए 20 फैसिलिटेटर चाहिए, जबकि सर हम एक लेक्चर हॉल में, जैसे हमारा लेक्चर हॉल है उसमें हम टीबीएल करवा सकते हैं, राउंड टेबल अब अगर नहीं भी है हाँ, तो लेक्चर हॉल में ग्रुप्स बना के हम करवा सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब राउंड टेबल तो एक आइडियल एनवायरनमेंट है। जब जहाँ पे फिक्स्ड लेट्स से वो है, वहाँ पे आप ग्रुप्स को इस तरह बना सकते हैं कि वो ग्रुप्स में बैठ जाए स्टूडेंट्स। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि पीबीएल में आपने कहा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट ना हो, होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। इससे अगर जैसे अब एक गायनी ऑप्स का टॉपिक है, ठीक है, हमने उनका कंडक्ट मेंटेन करना है सेशन का सारा कि बच्चों को एक्टिव लर्नर बना रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चों की भी जो प्रॉब्लम्स हो गया कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होगा, तो फिर जो बच्चों की भी इसमें जो प्रॉब्लम्स होगी क्या वो सॉल्व हो जाएंगी? जी, उसमें मैडम वो जो मैंने कहा ना पीबीएल पैकेज बनेगा, ठीक है, वो पीबीएल पैकेज एक्सपर्ट्स बनाएंगे और उसको हर फैसिलिटेटर पढ़ेगा। ठीक है। और एक बात, और दूसरा, अगर फैसिलिटेटर, पहली तो बात यह है कि फैसिलिटेटर ने बहुत से सवालों का जवाब नहीं देना, और जी, अगर जरूरत पड़ जाए तो देयर इज नो हार्म इन सेइंग टू स्टूडेंट्स के नहीं, आई एम सॉरी, मुझे इसका जवाब नहीं आता, तो लेट्स फाइंड इट टुगेदर। तो वो सबकी एक लर्निंग नीड बन जाती है। इनफैक्ट दैट बिकम्स अ गुड एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स के लेक्चरर्स जो हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है और उनकी भी लर्निंग नीड्स होती है। तो इसमें बिल्कुल ओपन जो है वो बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। स्टूडेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फैसिलिटेटर आ रहा है वो जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो। जी सर, थैंक यू सर। एनी अदर? टीबीएल जी, सर टीबीएल हम क्लिनिकल सेशंस के लिए कर सकते हैं ना, जो मैं आपसे जैसे पूछ रही थी पहले, क्योंकि पीबीएल तो बहुत इंटेंसिव है और वो तो हम तो जैसे क्लिनिकल सिनेरियो चाहते हैं कि एंड में डिस्कस हो, तो हम इनको दें कि आप टॉपिक पढ़ के आए, उस पे एमसीक्यूज टेस्ट लेके और एंड में आप उस पे सिनेरियो पे डिस्कस। बिल्कुल सही है मैडम। क्लिनिकल के लिए टीबीएल और सीबीएल ज्यादा अप्रोप्रिएट है। जो पीबीएल है वो क्लिनिकल के लिए जरा मुश्किल हो जाता है। जी सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? राइट, सो दिस इज जो पार्ट 1 है हमारे आज के सेशन का, जो जिसमें हमने पीबीएल को कवर किया, उसका कॉन्सेप्ट और उसके स्टेप्स, फिर पीबीएल के स्टेप्स कवर किए और फिर उनको कंपेयर किया। कोई अगर क्वेश्चन अभी है तो वी कैन डिस्कस दैट बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। सर सारे क्वेश्चंस आपको बार बार कर रही हूँ। नहीं, श्योर, नो प्रॉब्लम। सर ये जो हम स्टूडेंट्स को टीबीएल में कहते हैं कि आप पहले से पढ़ के आए, ये फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो सकता है? एग्जैक्टली दिस इज अ फॉर्म ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। ये आप देखिए ना, फ्लिप्ड क्लासरूम को अगर आप एक कॉन्सेप्ट के तौर पे लें तो ये उसमें फिट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से पढ़ के आते हैं और उनको लर्निंग आउटकम्स का पता होता है, और अब फिर आप उनको प्रॉब्लम्स देते हैं सॉल्व करने के लिए,
फर्क सिर्फ ये है कि TBL में पहले आप इंडिविजुअल रेडीनेस एश्योरेंस में अश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स रेडी हैं उसके लिए। जी ठीक है तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है उसमें। जी और कोई क्वेश्चन? मैं बहुत से नाम यहाँ पढ़ रहा हूँ, सलमान राणा साहब, हिमायतुल्लाह खान साहब, डॉक्टर रेहाना अमीर, लेकिन सब लोग खामोश हैं। जी हजूर सर, कुछ हम सुन बोलिए, रहे हैं। हजूर कुछ बोलिए। कोई सर वी आर question? लिसनिंग सर। सर लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं क्या- सर, एब्जॉर्ब नहीं, करना और भी सुन रहे रिप्रोड्यूस हैं सर, करना जरा मुश्किल है अब्जॉर्ब कर थोड़ा रहे हैं। सा। आपने सर जो पढ़ाया वो बेहतरीन है इसमें बेसिकली। जी मैडम बताएं कि क्या कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा है, खुल के बात करें ना। ये कौन सा कोई फॉर्मल बेसिकली सर सेशन नहीं यहाँ है। पता है क्या प्रॉब्लम है, जी यहाँ कन्वेंशनल PBL चलता है, जैसे आमतौर पे समझ ले केस बेस्ड स्टडी के जैसे केस पकड़ा और उसको डिस्कस कर लिया। जो TBL है एक्चुअली यही है कि वो उस PBL की टोटल प्रेपरेशन है ना, कि पहले जी। इंडिविजुअल प्रेपरेशन, फिर ग्रुप प्रेपरेशन, फिर उसके तरीके MCQ या MCQs, ताकि जी। PBL को वो समझ सके। यहाँ जी। चूंकि सिंगल एक सेगमेंट की शुरू से आदत है कि जी एक केस पकड़ा और उसको पढ़ लिया, इस वजह से एक्चुअली प्री प्रेपरेटरी स्टेप उस केस की एंड पोस्ट प्रेपरेटरी उसको जी। करने के बाद जो असेसमेंट है वो टूल नहीं यूटिलाइज किए जाते ना, इसलिए सारों को डिफिकल्ट लग मैडम रहा है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं एक मुझे तो दफा बहुत अच्छा लगा, एक दफा आई लव इट, आप बहुत अच्छा, एक दफा एज एन एक्सपेरिमेंट आप ये बहुत क्लास में अच्छा, करके बिल्कुल देखें। एक दफा ये क्लास बहुत में अच्छा, बहुत करके देखें एंड देन यू विल सी के ये इसका कितना आउटकम बेहतर कितना होगा ना, एक्टिव इसमें प्रोसेस। केस परफॉर्मेंस बेहतर होगी उनकी, जी इसका राइट आउटकम बेहतर है। असेसमेंट डेफिनेटली। में इसमें स्टूडेंट की लर्निंग बहुत ज्यादा हम है। लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में शुरू किया। हमारी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो एज गेस्ट लिसनर इस सेशन में मौजूद है। वो अभी सिर्फ सुन रही है, लेकिन वो हमें ये स्टार्ट कराया है उन्होंने। आपके सेशन के बाद। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? जी 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 मैं आपको कह रही थी कि हमारे डिपार्टमेंट में हमने TBL शुरू कराए हैं। हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज गेस्ट लिसनर इस सेशन में मौजूद है। जी जी। हम लोग इस सेशन से हमने बहुत सीखा और हम इंशाल्लाह अपने सेशंस को इम्प्रूव भी करेंगे। थैंक यू। अगर आप वो सीक्वेंस को फॉलो करें और स्टेप्स को फॉलो करें तो इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। जी राइट वो इनवॉलंटरी स्टेप बन जाएंगे ना, फिर वो अनकॉन्शियस स्टेप बन जाएंगे, उनको एग्जैक्टली। बॉदरिश नहीं होनी इस तरह याद आप करने की। एक या दो दफा करें तो फिर आदत बन जाती है और स्टूडेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, उनको पता होता है कि अगला स्टेप कौन सा होना है। तो उनके लिए भी कोई इसमें सरप्राइज नहीं होता। राइट ओके जी सर। जी ये था हमारा पहला हिस्सा जो PBL और TBL पे था। तो नेक्स्ट जो है वो है केस बेस्ड लर्निंग पे। बेसिकली हम अभी केस बेस्ड लर्निंग करेंगे और उसके बाद टास्क बेस्ड लर्निंग, और फिर हम कंपेयर करेंगे जो चारों सेशन हमने डिस्कस किए हैं, PBL, TBL, CBL और टास्क बेस्ड लर्निंग। जो है जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप बेशक फौरन उसको पूछ लीजिए। तो ये है केस बेस्ड लर्निंग। स्लाइड नजर आ रही है आपको सब लोगों जी को? जी सर। राइट right now case based learning, our plan is to answer these questions. What is CBL? What is the structure of case based learning? How to select a case for case based learning? How case based learning is conducted? The three sort of methods: normal to abnormal approach, modified essay question, and case presentation. So we'll go through that in a bit detail. Or
फिर एक्टिविटी अगर if that would be possible. So केस बेस्ड लर्निंग कोई नई चीज नहीं है। 1912 में, क्या 100 साल से ज्यादा हो गए, अभी है लेट्स से 2022 और 1912, तो कोई 110 साल पुरानी बात है। हमारे पास ये बड़ी लेट पहुंच रही है। So the James Lawrence Smith, the professor of pathology at the University of Edinburgh, introduced what he called the case method of teaching pathology, a little bit history of case-based learning. Or Smith advocated students correlating the clinical history of patients, including their symptoms and signs, with findings at post-mortem by researching the patient's information from their clinical records. So basically, it was going back कि पोस्टमार्टम में जो फाइंडिंग्स उनको मिली हैं उसके बेस पे वो वापस जाएं और पेशेंट का रिकॉर्ड देखें. And this case method aimed to help students link science and clinical practice. So basically ये है थी lab to patient approach कि आप लेबोरेटरी में एक रिजल्ट देखते हैं और फिर जाके जो है उस पेशेंट को देखते हैं कि जिसका ये रिजल्ट आया है एक्चुअली उसका प्रॉब्लम क्या है. Right? So that was the beginning of the case-based learning. Right. The Harvard Business School is often credited as one of the first, if not the first, major institutions to adopt case method across the curriculum. Founded in 1908, the case method was adopted in 1920 and is still used today. So, 100 साल हो गया the Harvard Business School case-based learning use कर रहा है. So it's quite an old method. So by definition, there is no international consensus as to the definition of case-based learning, though it is often contrasted to problem-based learning in terms of structure. So usually इसको problem-based learning से compare करके they're trying to understand rather than having a definition. CBL is a form of inquiry-based learning and fits on the continuum between structured and guided learning. Structured learning है जो let's say आप lectures लेते हैं, guided learning है जिस तरह TBL में guided learning थी, तो ये it fits in between these two extremes. The goal of CBL is to prepare students for clinical practice through the use of authentic clinical cases. It links theory to practice through the application of knowledge to the cases. अब इसमें भी जो major चीज है वो application of knowledge है. Case जो एक बड़ा major difference जो है PBL में students problem से सीखते हैं. They understand the problem and they learn from the problem. उसमें emphasis problem solve करने पे नहीं होता. Whereas in CBL, students apply the previously acquired knowledge to solve the problem. That's the major difference between the two. PBL उस सर problem स्लाइड नहीं चेंज हो रही, इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड है. ये introduction definition पे है. इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री वाली स्लाइड है, लैब टू पेशेंट अप्रोच, ये चेंज नहीं हुई. ओहो, why? अब चेंज हो रही है? नो सर. Let me share it again. जी. Oh, screen is paused.
मैं दोबारा शेयर करता हूँ। जी अभी आ रही, अभी देखें। जी जी जी, अब आ रही है। हाँ चेंज हो रही है अभी। राइट, तो ये राइट, तो ये हार्वर्ड वाली थी और फिर ये थी इंक्वायरी बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. Now, the similarities in the process of conducting the session, comparing the case-based learning with problem-based learning. Small group sessions हैं दोनों, ये similarity है. Active learning है दोनों में, another similarity. Student-centered हैं दोनों जो methods हैं. और दो sessions. CBL में it's possible to have one session, but we can have two sessions as well. PBL में भी minimum 2 sessions होते हैं. सर CBL में भी हम उनसे एक दिन पहले शेयर कर सकते हैं कि कल हमने आपको क्लिनिकल वार्ड में आपके साथ ये केस डिस्कस करना है. मैं मैडम अभी जब आपको एग्जांपल्स दूंगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये आप ये एक दिन पहले भी दे सकते हैं या आप प्रीवियस उनको आप पहले से नहीं भी पता तो आप उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू हैव टॉट देम अर्लियर. जी सर. हाँ, ये आगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात. ये प्रोसेस है CBL का. अगर आप देखें तो बहुत से स्टेप्स जो हैं वो PBL से मिलते हैं. एक केस है और केस इज एनालाइज्ड बाय द ग्रुप. उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है. उसमें वो अगर उनकी कोई लर्निंग नीड्स हैं तो उनको वो वहीं पे हल करते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये अगर 2 हिस्सों में PBL है तो उसका दूसरा सेशन टिपिकली इस जैसा होगा. ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी अगली few slides में. Important thing is that the objectives are different between case-based learning and problem-based learning. In problem-based learning, understanding the problem, identifying the gaps in the knowledge, learn to close or narrow the gaps. So basically, आप problem को use कर रहे हैं as a stimulus for learning, as a trigger for learning. Whereas in case-based learning, there is application of previously acquired knowledge in novel situation and solving the unfamiliar problems. So mainly learn on the spot. So basically, case-based learning, the effort is to solve the problem and learn while trying to solve the problem. Whereas in PBL, we learn from the problem. It's not necessary to solve the problem. In case-based learning format, the learning session is more structured and controlled than in PBL. But like in PBL, students as well as tutors share responsibilities both in the teaching and learning process. So in CBL, teacher has more control over the class. Whereas in PBL, the students have more control over the activities. PBL has guided inquiry approach because the lecturer would help the students along the way. And over an open-ended approach to small group teaching of PBL, जबकि PBL में lecturer की guidance जो है minimal होती है, but in CBL the lecturer would guide the students to solve the problem जहाँ पे students stuck हो जाते हैं. If students explore tangential material or have incorrect assumptions about the material approach, the facilitator can correct them in case of case-based learning. Whereas in PBL, lecturer उनसे कहता है कि जाओ और ढूंढो इसका आंसर ढूंढो इस क्वेश्चन का.
And the students have pre-assigned journal readings in जिस तरह मैडम अभी कह रही थी कि केस बेस्ड लर्निंग में आप उनको कह सकते हैं कि आप फर्ज करें कि आप अनीमिया के बारे में पढ़ के आए, कल हम एक केस जो है वो अनीमिया का डिस्कस करेंगे। अब जब आप कहते हैं अनीमिया का पढ़ के हैं तो आप उनको स्पेसिफिकली ये नहीं कहते कि आयरन डेफिशिएंसी पढ़ के आए या हिमोलिटिक पढ़ के हैं, वो सारा अनीमिया पढ़ के आएंगे, लेकिन केस जो है वो किसी भी उसका कॉज कुछ भी हो सकता है अनीमिया का। फिर जो कुछ वो पढ़ के आए हैं उनको दे हैव टू अप्लाई देयर नॉलेज। फर्ज करें वो आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का केस है और वो अनीमिया का पढ़ के आए हैं, तो दे वुड हैव टू solve that problem by applying whatever they have read a day earlier. In CBL, the group focuses on creative problem solving with some advanced preparation. Learning objectives for the session are provided to the students before they see the case. So CBL में students को काफी सारी information होती है कि what they are going to discuss, जबकि PBL में हमें पता है कि students को they don't know what they are going to discuss. CBL does not necessarily need to be based on a clinical case. A basic physiology, anatomy, biochemistry problem could easily be used as the basis for a CBL case. I'll show you some examples. Okay, now comparing the PBL with CBL, the case PBL, the realistic problem, it unfolds over time, and it's उसमें integration है. There would be maybe physiology, anatomy, biochemistry, or clinical. In CBL, of course, case is again realistic. It may unfold over time, or you can give the whole case at one time. It is discipline based. इसमें integration ज़्यादा नहीं है. PBL में integration is maximum, whereas CBL में वो चूंकि सिर्फ एक आप जिस तरह गायनी का केस है या पीडियाट्रिक्स का है या सर्जरी का है, तो उसमें integration ज़्यादा नहीं है. Facilitator role in PBL, facilitator manages the group, does not teach the students, whereas in CBL, the facilitator or lecturer manages the group and teaches some content and asks content questions from the students. So the role of facilitator or lecturer is more active in CBL as compared to PBL. Students' role in PBL, of course, students are responsible for learning. They discuss, ask questions, read, and identify resources to help their study. Each student in the group is responsible for researching one of the topics covered in the case. In CBL, of course, students are responsible for learning and application of knowledge to solve the case. They discuss, ask questions, and read, and each student in the group contributes to the solution of the problem. So application of uske. Resources, only core resources are given in PBL, whereas complete list of learning resources or material is provided in CBL. Sorry. Sessions layout, small group meet 2 or 3 times in PBL, whereas in CBL, the small group meets once or twice. They may finish the whole thing in one session as well. In CBL, the main focus is application of scientific knowledge in novel clinical situations, comprehension of pathogenesis and pathophysiology, development of clinical reasoning. This is the main focus in case-based learning. And if you see this cone of learning where they say that the learning is maximum when you participate in a discussion or by doing it, so it's much better than, let's say, what we read, what we hear, what we see, and what we hear and see. The discussion, the actual discussion and solving the problem
So it's the retention and understanding is much better as compared to other methods or passive methods of learning. The structure of CBL group consists of 8 to 10 students and 1 tutor. CBL sessions takes place in a specialized small group learning room. A CBL module provides case information for 2 sessions per week. This information is the basis of the small group discussion अगर आप 2 sessions में कर रहे हैं. Groups meet at the beginning of each week for the first session, which is CBL 1, and this can be the whole class, not necessarily in small groups. This is called mini case method. And again, at the end of the week for the second CBL session, which is CBL 2. And the CBL 2, the case should be a scenario, audio, video, or specimen. So ये जब case discussion है तो scenario is of course one, but we can use other things like video and audio or pathological specimens as well. Students work together in a group. The group attempts to solve problems using critical thinking. The discussion is student-centered. The discussion allows the students to integrate knowledge gained while exploring the case. The tutor helps facilitate group discussion. And the tutor helps by correcting incorrect statements. So tutor और जो lecturer है उसका बड़ा active role है उसमें as compared to PBL. And the tutor जो है is does not lecture. जो incorrect statements हैं उनको तो correct करेगा, लेकिन it's not to dominate the discussion or deliver a lecture, right? Now coming to the case, what characteristic of the case कि कौन सा case हम इसमें select करना चाहिए. So case should be authentic, based on the real patient, involve common scenarios, be aligned with defined learning outcomes, have educational value or relevant to the reader. ये मतलब rare cases or complicated cases are not suitable for CBL. The case should be able to stimulate the interest of the students, promote decision making, and have general applicability. So as I said, the common case, the daily problem type of scenarios or videos or audios should be used for case-based learning. The case should be well written so that its readability is appropriate for the level of the students. So अगर 5th year का students है तो obviously case should be of that level, or अगर 3rd year का students है तो case should be of that level. The case should clearly state and eliminate the problem without resolving it. So small group process is more or less similar to problem-based learning, so we would not go into much detail of that. और अब आते हैं वो जो approaches हैं, the 3 approaches I said, normal to abnormal approach, which is a mini case method, more suitable for preclinical, and this can be conducted in 1 session. You may not need 2 sessions. So this is normal to abnormal approach, mini case method. I'll show you some examples of this. Second, using modified assay questions, and this is called interrupted method. It can be used both for preclinical and clinical. And third is case presentation, which is mainly for clinical. So 3 methods: normal to abnormal approach, mainly for preclinical; modified assay questions, both for preclinical and clinical; and case presentation, mainly for clinical. So first, normal to abnormal approach.
Now ये एग्जांपल लें आप कि आपने स्टूडेंट्स को फीटल सर्कुलेशन पढ़ाई है. So let's say it's a 2-hour session. आपने फर्स्ट 45 मिनट्स में स्टूडेंट्स को fetal circulation पढ़ाई. Once students have been taught and you have made sure that students have understood, so उसमें फिर आप इंट्रोड्यूस करें कि चेंजेस क्या होती हैं एट बर्थ. फीटल सर्कुलेशन में क्या चेंजेस होती हैं एट बर्थ? Disruption of umbilical vessel, closure of foramen ovale and closure of ductus arteriosus. ये थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करें एंड देन उनसे कहें कि अब आप बताएं कि क्या चेंजेस होंगी हीमोडायनेमिक्स में, राइट? और लर्निंग इश्यूज, इसमें जो भी स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आएगा वो आप मौके पे ही एड्रेस करेंगे. कैन आई रिपीट दिस अगेन कि आपने फीटल सर्कुलेशन पढ़ाई नॉर्मल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉर्मल टू एबनॉर्मल अप्रोच. आपने फीटल सर्कुलेशन पढ़ाई, फिर आपने उनको बताया कि क्या चेंजेस होती हैं एट बर्थ, कि अम्बिलिकल वेसल डिसरप्ट हो गई, फोरामेन ओवल क्लोज हो गया और डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो गया. अब अगर स्टूडेंट्स ने दे हैव लर्न द फीटल सर्कुलेशन और अब उनको चेंजेस का पता चल गया कि उनको पता जी कि ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो गया, फोरामेन ओवल क्लोज हो गया, तो अब कार्डियक सर्कुलेशन क्या होगी, हीमोडायनेमिक्स अब क्या होगी. तो अब स्टूडेंट्स उस पे जो है दे विल ट्राई टू सॉल्व इट based on what they have learned in the fetal circulation. कि अगर ductus arteriosus close हो गया तो अब blood जो है वो pulmonary vessel से रोटा में नहीं जा रहा, वो अब lungs में जा रहा है, तो उसके क्या effects होंगे. So students apply कर रहे हैं the normal knowledge in this an abnormal situation, और जहाँ पे वो stuck होते हैं lecturer उसको help करता है. ये वही बात है जो हम scaffolding में समझ रहे थे. So changes hemodynamics में क्या होती हैं, और learning issues to be addressed in the same or following session. अगर आप 2 में करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं कि जी आपने fetal circulation एक सेशन में पढ़ाई और फिर ये जो दूसरा सेशन है अलग से कर रहे हैं, या you can do it both sessions in one go. So this is an example of normal to abnormal approach. So learning outcomes in this session, for example, by the end of this session, which is the second session of CBL, the students will be able to discuss the changes in hemodynamics of cardiac cycle in acyanotic type of congenital cardiac anomalies, and explain the pathogenesis of reversal of shunt. It depend करता है कि आप अपने learning outcome किस level पे रखना चाहते हैं. Another example is let's say we have discussed cardiac cycle in a normal heart, and then we introduce the concept of VSD, PDA, or TGA. Let's say VSD, हमने students को cardiac cycle पढ़ाया और फिर कहा कि आप ये situation ये है कि there is a ventricular septal defect or there is left to right shunt. So in this situation, changes in hemodynamics क्या होंगी और इन changes से क्या symptoms और क्या signs और क्या complication arise कर सकती हैं. So again, students are applying their knowledge of normal cardiac cycle in an abnormal situation and trying to understand, and of course, lecturer would help them wherever they need. So they may talk about, for example, the volumes, the pressures, the oxygen saturation, etc. So this is another example of normal to abnormal approach. We can use these diagrams. This is a normal heart and this is VSD. So try to think about if there is a left to right shunt, what changes would be there in the volume, pressure, and oxygenation. And while students are trying to explain, the lecturer would help them along the way.
Another example of normal to abnormal approach, the normal thyroid hormone synthesis with feedback mechanism. हमने उनको ये पढ़ाया, and then we say that okay, thyroid hormone synthesis in hypothyroidism or hyperthyroidism using a diagram. So और अगर उसके साथ उन्होंने they have read about the functions of let's say thyroxine, then they can also think of the consequences of decreased production of thyroxine, let's say in hypothyroidism, या hyperthyroidism में क्या होता है. So using, let's say, this diagram and explaining to them, and then say, okay, there is disruption at some points, and what could be the implications of that. Another example of normal to abnormal approach, like in biochemistry, synthesis of androgens or congenital adrenal hyperplasia, or आपने ये उनको पढ़ाया, or then you say, okay, there is a problem here. There is a deficiency of 21 hydroxylase. So imagine now this is not going this way. So this is going this way. So what would happen in the different levels of the hormone, and what could be their practical problems, symptoms, and signs? And so students would try to explain, and the lecturers would help them along the way. So in first session, we are talking about normal to abnormal approach. अगर आप 2 sessions में करना चाहते हैं, so first session can be the whole class. चाहे lecture है, directed self-learning है, assignment है, जैसे cardiac cycle. And second session में, then we divide the students into small groups. Right? So, and then we give them the questions they need to answer. We talked about VSD. So we have taught, let's say, a common lecture on cardiac cycle, and then we divide them into groups, and they are introduced with the concept of VSD, and then they have to answer the questions, changes in hemodynamics, and what would be the symptoms, signs, and complications. So this can be done in 2 different sessions, or can be done in the same sitting, but first session as a whole class, and second session as small group. So this is the first method of normal to abnormal approach. Now, modified essay question is a second method of case-based learning, where we use the modified essay to teach the case-based learning. I'll show you the example here. Okay, now, yeah, this is, let's say, a modified essay question. Is the slide visible? Can you see the slide, Yes, please? sir. Yes, sir. Right. Yes, Now, sir. this is an example of the case-based learning through modified essay question. So here is a case. A 6-month-old boy presented with high-grade fever, irritability, and several episodes of vomiting for 3 days. He was feeding poorly. There were no respiratory symptom. He had 1 episode of seizures lasting 3 minutes on the day of admission. So it's a pediatric case. Upon examination, his temperature was 39.5 degrees centigrade, and he was alert. Now, आपने ये scenario दे दिया, and then because students have been taught these things before, so the first question is state 2 differential diagnosis and justify by giving a reason. So student small group में वो diagnosis और उसकी reason discuss करेंगे. And then once they have done that, then you can ask the second question. State 4 questions you would ask in the history regarding fits in this infant. Give 1 reason for asking each question. Again, now students would identify the questions, and they would give reason why actually they are asking that question. Then they, let's say,
now you provide some more information. Further history and physical examination did not support the provisional diagnosis of meningitis. And then you have given the initial investigation results, and then you ask questions about those investigation results, right? Explain the mechanism, and then list 2 methods of, let's say, if you want to explain them how to collect the urine specimen in children, methods and precautions. And then again, the most likely diagnosis and the what would be the final investigation you would do. And then next could be on the revealing the diagnosis. Let's say this child was found to have, I think, urinary tract infection with febrile fits. So what would be the 3 steps in the immediate and long-term management of this infant in terms of urinary tract as well as in febrile fits? So basically, we are using a modified essay question. Now, we can use these questions in examination as well, but we can use them as teaching methods. So basically, we are revealing the information over a short period of time, and students are made to discuss. And of course, wherever they are stuck, the lecturer would help them. So this is the second method of this case-based learning, right? So, right here. Right, now, the third is a case presentation. Now, again, this is modified. So imagine there's, let's say, one posting, there are 10 or 20 students sitting there. So they ask the, let's say, students to prepare a case. 3 or 4 students, they prepare a case. One student takes history, another perform physical examination, the third one look at the investigations and the management, etc. Now, these 3 or 4 students who have complete information about the patient, they come to the class. And the first student presents the biodata of the patient and the presenting complaints. And then you ask the class, the whole group, let's say 10 students or 15 students, to take history from this student who has taken the history. So this student acts as a repository of information or as attendant or caregiver of the patient, and rest of the class take history from this student. And you make sure that every student in the class take part in the discussion and ask questions. And once they have taken the history, it might take 10 to 15 minutes. Then the whole class makes a list of differential diagnosis and the most probable diagnosis. So this is the first step. Now then the second student comes who has the information about the physical examination, and he gives just the basic information, anthropometry and vital signs. But then the class would ask from the students the findings. So class must, or the students must ask whether spleen was palpable or liver was palpable, whether patient has jaundice. So they need to ask these questions similarly as they had taken the history. So by the end of this part, they would have modified their list of differential diagnosis, and they have to discuss the reasons why they have modified their differential diagnosis. Similarly, the third student who comes and he just provides the routine investigation, but special investigations, again, the students have to ask about the certain investigations and their results, and they have to give reason why they are asking for that investigation. They cannot ask anything, whatever they like. And in this way,
they would arrive at a final diagnosis, and then they can discuss the pathogenesis of symptoms and signs. So, and then they can discuss the management as well. So basically, in this way, students solve that problem. So these three methods of normal to abnormal approach. One, second, the modified essay question, and third, the usual case presentation, but modified, that rather than the student come and present the case, basically the group takes history from that student. They ask about the physical examination findings from those students. They ask about the investigations, and finally the class comes to a diagnosis and discuss about the management. So that is sort of concept and conduct of case-based learning by these different methods. So any questions at this point? Anybody has a similar experience in case-based learning? The one I described? Or anyone has conducted the case-based learning? जी सर, हम करते हैं और Yes, इसी sir. तरह 2 लेक्चर होते हैं। पहला हम लेक्चर लेते हैं और उसके बाद फॉलोड बाय द CBL सेशन, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके डिफरेंट रूम्स में करके, Right. तो हम ऑन एवरी वीकली बेसिस पे कर रहे हैं सर हमारे डिपार्टमेंट। जो ये वो और- पहला मेथड है जो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल टू एबनॉर्मल अप्रोच, कि आप आप एक चीज के बारे में पढ़ाते हैं और उसके बारे में फिर एक डिफरेंट केस स्टूडेंट्स को देते हैं जो उस पे डिस्कस करते हैं। तो ये आई थिंक दैट इज normal to abnormal approach. And this is all for surgery and pediatrics also, sir. That's why we follow the same methodology. Yeah, basically it's more relevant to clinical sites. लेकिन जो नॉर्मल टू एबनॉर्मल अप्रोच है वो प्री क्लिनिकल में भी हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, वो फीटल सर्कुलेशन या हीमोडायनामिक्स या थायराइड हार्मोन सिंथेसिस या congenital adrenal hypoplasia, so the hyperplasia, so ये you can apply in preclinical. Anybody has any experience of applying case-based learning in preclinical years? Yeah, is there any preclinical teacher here? Sir, I am basically a clinical teacher, but I had to teach the students of first year and second year the segment on embryological development of genitalia. So I did case-based learning, and also then took a quiz on Socrative, and I believe that their prior knowledge of embryology was helpful in understanding. All right. So आपका भी यही था कि ये normal to abnormal approach. Yes, sir. Yeah. Anybody has any experience of using modified essay question in case-based learning? या जो थर्ड मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है कि केस बेस्ड लर्निंग, जिसमें जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पूछते हैं। एनीबॉडी हैज एक्सपीरियंस दैट? जी सर, है ना, इसमें हम एक्चुअली जितनी भी FCPS पार्ट 2 की प्रिपरेशन होती है वो इसी पैटर्न पे होती है जी, के बाद में जस्टिफिकेशन के साथ हिस्ट्री, जस्टिफिकेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बता रहे। तो ये आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर बता रही हैं। पे ज्यादा एप्लीकेबल है। अंडर ग्रेजुएट्स को हम करते तो उसी तरह, लेकिन जस्टिफिकेशन का लेवल कम रखा जाता है, बाकी चीजों को ज्यादा रखा जाता है। राइट, ओके, दैट्स गुड। सो मतलब जो आप लोग का एक्सपीरियंस है नॉर्मल टू एबनॉर्मल अप्रोच में और इसी तरह केस प्रेजेंटेशन में, लेकिन प्रोबेबली मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने यूज नहीं किया। मे बी दैट कुड बी
वन मेथड जो आप ट्राई करना चाहें, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए पहले आपको एक मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा, राइट? पहले जो एग्जाम का पैटर्न था ना, जो जी जी, कंसल्टेंट्स का था, वो मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन पे ही था कि जो अच्छा, प्रॉब्लम थी वो मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन, बाद में इसको चेंज करके तो एमसीक्यूज पे ले गए ना। लेकिन हाँ जी, हालांकि वो मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल में एमसीक्यूज एक अलग डोमेन है, वो एक अलग डोमेन है। हाँ उसमें नहीं, जैसे आप 4 वर्ड्स में कर सकते हो ना कि कैंडिडेट की क्या असेसमेंट है। मॉडिफाइड ऐसे मैडम क्वेश्चन ये क्लिनिकल असेसमेंट बहुत अच्छी, मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा मेथड है हाँ, बहुत अच्छा मेथड है। पढ़ाने का भी और असेसमेंट का भी। इसमें आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एनालिटिक स्किल्स, और शॉर्ट टाइम में कर इंटरप्रिटेशन, सकते हैं ना, शॉर्ट टाइम में। बहुत से स्किल्स जो हैं इसमें असेस किए जाते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, लेकिन दिस इज वन वेरी गुड मेथड ऑफ असेसमेंट, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो सीपीसी हो रही होती है, जी ये जो सीपीसी प्रेजेंट करते हैं, वो भी जी, वो इसी का एक तरह से फॉर्म हाँ, है। अगर आप सीपीसी में इंफॉर्मेशन जो है जो सीक्वेंशियल डिस्क्लोजर कर रहे हैं, तो वो एमईक्यू टाइप बन जाता है कि आप पहले आपने एक इंफॉर्मेशन दी, उस पर डिस्कस किया, फिर फर्दर इंफॉर्मेशन दी, फिर उस पर डिस्कस किया। यस, दैट बिकम्स मॉडिफाइड ऐसे टाइप ऑफ अप्रोच, ओके। राइट? Do you want to have a short break? जी, यस सर, बोले लॉन्ग सब। ब्रेक सर, लॉन्ग ब्रेक। यस नहीं, सर, ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वो बस एक ज्यादा लंबा सेशन नहीं है। इसके बाद जो है टास्क बेस्ड लर्निंग पे, वो इंशाल्लाह हम जल्दी से खत्म कर लेंगे। लेट्स से मेरे पास यहाँ 7:30 बजने वाले हैं, आपके पास 4:30 होंगे, राइट? यस सर। यस तो सर। कितने 5 मिनट की ब्रेक, 10 मिनट की? लेट्स से 10 अभी मिनट्स, जी, अभी 10 आपके पास, मिनट्स मिनिमम 10 सर, 10। मिनट। हाँ, अभी आपके पास 4:30 है, तो लेट्स से 4:40 पे दोबारा मिलते हैं, ठीक है सर। ठीक है? इस पे ओके सर। हाँ, इसको आप ऑन रखिए, इसको क्लोज नहीं कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम सर, वेलकम अगेन। Thank you. Welcome to you as well. So थैंक यू सर। can we start? सर प्लीज। Yeah. Okay. So 5 minutes, sir. it's the last part of our session, which is on task-based learning. Slide आ रही है आपके उसमें? Can you see the slide? सर जी सर। यस सर। Right. Yes, sir. Good. Okay. So task-based learning. Generally, we use the term PBL, but it can mean so many things, like team-based learning, can be task-based learning. So that's why I decided to use the abbreviation of task-based learning different than PBL. It can also mean technology-based learning or theme-based learning. So to make sure that we don't confuse between different terminology, so we will be using the term TSK or task-based learning in our session. All right, so the learning outcomes this session, we explain the concept of task-based learning, compare the task-based learning with other methods like PBL, team-based learning, and case-based learning, and conduct the task-based learning sessions. And the participant would be able to implement the task-based learning approaches in their institutions. So little bit of history in introduction. It was introduced in 1988 by Professor Harden, who made a presentation in the Association of Study of Medical Education in Bristol.
and was reported in 1989. The reference is there. So in PBL session, a small group tackles a paper simulation, whereas in task-based learning, the focus for learner is not a paper simulation, but a real or actual task, commonly addressed by the health care professionals. Right? So that is the first thing which we should be very clear. Although the approach is like PBL, Same. yeah, basically it is a PBL. I'll show you how. But in this case, it is not a paper problem. It's not a scenario. It's not a trigger. It is an actual task. The important thing is that this task should be one which is commonly addressed by healthcare professionals, right? So, आ जाओ okay, so please mute yourself. Right. So in the major difference between PBL and task-based learning is that in PBL, we use a paper problem, whereas in task-based learning, it is an actual task. But important thing is that task should be commonly addressed by health professionals. It might be, for example, measurement of blood pressure, or taking history of a patient with pain in abdomen, or prescribing an antibiotic for a patient with a chest infection. So tasks would be like that. It can be a procedure like measurement of blood pressure, or it can be in history taking or writing a prescription. So these are the tasks which are commonly faced by healthcare professionals. In task-based learning, the student or trainee learns about the task, develops an understanding of areas related to the task, and looks at the application of the knowledge and skills in an other context and acquires generic competencies as exemplified in the task. So this seems a complicated statement, but there are few steps which we can make clear. The first is that a student or a trainee learns about the task. So that is first thing, learn about the task. Second, develops an understanding of areas related to the task. That's very important, right? Otherwise, if it is just a task, then it is like a mechanic. It's we might remember some technicians in the operation theater. They are good at doing lumbar puncture or giving local anesthesia, but they just know that task. They know only that procedure. They do not know or understand the areas related to the task. That is important concept, that it's not only learning about the task, but understanding of areas related to the task. And the third point looks at the application of knowledge and skills in another context and acquires generic competencies. So the one, learning about the task. Second, understanding of areas related to the task. Third, applying the knowledge in a different situation. And fourth, acquiring generic competencies. So we will go more in more detail, but these are the four things which make a component of a task-based learning. The reason I really want to emphasize is on the second part, developing the understanding of areas related to the task. All right, now I know everybody is tired and maybe sleepy. Just have a little bit exercise. Let us see, the task is measurement of blood pressure. And we know that the student is supposed to learn about the task. Student is supposed to learn or have understanding of areas related to the task.
then application of knowledge and skills in another context, and generic competencies. So these are the 4 areas which students need to learn about a task, which is measurement of blood pressure. Now, we have 3 levels of students: year 1 student, year 5 student, and house officer. So let's say we learning about the task. Task is blood pressure, and learning about the task. So just think, what are the areas? For example, the second one, understanding of areas related to the task. So what are the areas related to the blood pressure measurement, which a first-year student would learn? Maybe, for example, the blood supply, maybe the location of arteries, maybe feeling the radial artery, something like that. Then what a 5th-year student is supposed to do, and what is a house officer to do. So you can do this exercise sometimes later and just fill up this table, and that would help you to understand what is really task-based learning about. Problem-based learning has been recognized as an important educational strategy and has been adopted in many medical schools. In the SPICES model of educational strategies, PBL is presented as a continuum. 11 steps in the continuum between PBL and information-oriented learning have been described. Means there are 11 steps between traditional lecture and PBL, and task-based learning is viewed as the final step at the problem-based end of the spectrum. So basically, we can say that the task-based learning is the highest level of problem-based learning. So let's say as I said, in SPICES model, presented by Harden, one side is traditional lecture, other side is problem-based learning, and there are 11 steps in between. It's a continuum, but finally it ends up with task-based learning. So it means that task-based learning is a problem-based learning, but it is the highest level of problem-based learning. So that's why, rather than having a paper problem, here is the actual task, which becomes focus of learning. And as I said, 4 things to be learned about the task, areas related to the task, and then the application of learning in a different situation, and the soft skills are associated with that task. So this is what is actually a task-based learning. The base is same as problem-based learning. In task-based learning, the learning is based in the real world of clinical practice. Means that it is basically in the wards. For clinical students, they learn really in the real world, in clinical Sir, practice. excuse me. Sir, task based learning simulated setting में भी तो हो सकती है ना, real world के अलावा? Yes. Simulate, yes. लेकिन इफेक्टिव ये होगी कि अगर आप रियल वर्ल्ड में करें, वरना सिमुलेट, yes, of course, आप एक person, you can have a simulated patient and then ask the students to take the blood pressure, for example, measuring blood pressure. So it can be there, especially in preclinical years. Lekin if it is in the clinical years, it's better to do it in the real situation. Then of course you are right, it is possible in simulated environment as well.
जी सर. All right. So, as task-based learning is considered the 11th and final step in the PBL continuum, all the principles described for PBL, which is focusing the learning on a problem, building new knowledge on what the students already knows, active learning and a student-centered approach to learning apply to task-based learning as in PBL. So all the principles, all the basics of PBL also apply to the task-based learning, which is focusing on learning from a problem, building new knowledge, active learning, and student-centered, right? So basically, we can say that this is another form of problem-based learning, but better than traditional problem-based learning. In task-based learning, students perform tasks which healthcare professionals are commonly faced in real life. That's important. They choose the tasks which are common, not the rare things. When experiences are reflected upon, students understand that the knowledge and skills acquired can be generalized and applied in another context. Reflection is a very, very important part of task-based learning. When you perform a task, you learn about it, you learn about the areas related to the task, and then you reflect upon that. A reflection is a major portion of or major component of a task-based learning, to think about all the experience, what the student have gone through that. सर ड्रिल्स भी टास्क बेस्ड लर्निंग में आती हैं, जैसे आप इमरजेंसी ड्रिल्स कराते हैं, पीपीएच ड्रिल है, पोस्ट ग्रेजुएट्स को जैसे करा रहे हैं, या शोल्डर डिस्टोशिया कोई ड्रिल करा रहे हैं, वो टास्क बेस्ड लर्निंग में आएगी? As long as अगर उसमें वो 4 लर्निंग पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, वो टास्क भी सीखते हैं और उससे रिलेटेड एरियाज भी करते हैं. Yes, that would be task-based learning. That's why I was emphasizing कि उसके 4 components जरूरी हैं to be labeled as a task-based learning. Otherwise तो वो एक टेक्नीशियन वाली बात है ना, कि आपने एक प्रोसीजर सीख लिया. So नहीं सर, जैसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, इस पे हम ड्रिल कराते हैं, ठीक है, नर्सिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस ऑफिसर्स भी हैं, ट्रेनी भी है, तो वो तो एक पूरी हेमरेज की ड्रिल है, इमरजेंसी में करना क्या है, तो वो टास्क पे हाँ, वो उसमें आएगा, क्योंकि वो उससे रिलेटेड एरियाज भी सीख रहे हैं. Yeah, right. Okay. So here what we call is the Coles cycle. The task-based learning is in accordance with the theory of experiential learning. Yeah, जिसमें there is a concrete experience और फिर reflection है उस experience पे. That's why I was saying that the reflection is an important component इसमें. Or then is the abstract conceptualization, means वो चीज जो हमने उस task में सीखी है, where else we can apply, or then we apply in that situation and we learn from there. So this is what is the experiential learning cycle, which makes the basis of task-based learning. Right. Task-based learning emphasizes the importance of reflection as an activity linking experience with learning. Here is a study which I'm quoting. This appeared in Medical Teacher in quite old 2001, and the following statements are actually the conclusion of that study. The first, the success in task-based learning was based on the motivation and learning needs of the students. So because, as I said, it is a form of PBL, so students have to identify the learning needs in the
first group at the onset, or motivation or learning needs are the real things which make the task-based learning as successful. The students were given something real to do. They had an opportunity to be active and not simply to watch others work. So this is a second reason why task-based learning is more popular and among the students and helps in learning. So first is the motivation and learning needs. Second is the something real to do, hands-on kind of activity, and giving students an opportunity to apply skills in real life, not in a simulated situation, is apparently one reason for their positive statement. I mean, that's what I was saying, that although we can do it in simulated environment, but doing in real environment makes it more appealing for the students. Here is a comparison between PBL. This PBL is task-based learning. It's not team-based learning. So the problem usually a written simulation or scenario, whereas in task-based learning, an example in clinical practice of the work undertaken by health care professional. Learning outcomes in PBL, they are implicit. They are not given to the students. Students have to identify their learning needs themselves. Whereas in task-based learning, they are made more explicit, and students are informed that what is expected of them when they go through this task. Learning contexts in PBL, the sessions are scheduled in the timetable, whereas task-based learning may be more in the wards, in outpatient or in laboratories, where it is experiential learning. Fourth, PBL usually in groups, occasionally maybe individual, otherwise students usually go and learn their learning needs in groups. TBL mostly can be on individual, but of course can happen in groups as well. PBL is more suitable for early years, like we say in preclinical years, whereas the task-based learning is more suitable for later years or clinical years. If we have multi-professional or interprofessional education, then task-based learning is more easy to implement as compared to problem-based learning. So this is the comparison between the task-based learning and the problem-based learning, although task-based learning is the highest form of problem-based learning, and same principles apply to both of them. Right, examples of tasks and the learning outcomes. Let's say that here the task is take a history from and examine a patient with fractured arm. So the objectives or learning outcomes for first-year students can be knowledge about the bones of the arm and the structure of the bone, communication skills, and an awareness of health care facilities in the hospital, and basically learning about the healing and the bone metabolism. So it's the same task, but the learning outcome or objective of for first-year students is mainly related to basic sciences. The same task, when it's being used for senior students, the learning outcomes or objectives may be different. Like here, causes and management of fractures, including the pathological causes and control of pain. But if the same task is given to a house officer, the learning outcomes becomes even more different. For example, X-ray interpretation and practical procedures such as splinting, and an increased appreciation of how illness reduces the ability to work. So basically what I'm trying to demonstrate here is that we have a task, the same task can be used at different levels, but of course the learning outcomes would be different, right? Another example,
talk to and examine a patient with myocardial infarction. So, and the learning outcomes for a first-year student: describe the normal structure and function of the heart, explain the measures for coronary disease prevention, demonstrate the communication skills in a simulated environment. So if you see, it's exactly looks like problem-based learning, where you identify the learning needs. Learning outcomes for a fifth-year student might be: explain the rationale for biochemical ECG and other investigations, describe the pathology of atheroma, or explain the management of pain in cardiogenic shock. And if it is for a house officer, perform procedures such as cardiopulmonary resuscitation and electrocardiography competently and independently, right? So this is, again, a task, a procedure which is commonly, or situation commonly faced by healthcare professionals, but the learning outcomes would be different at different stages of the training. Right, now here is a task. A 7-year-old boy is suspected to have acute appendicitis. Write a referral letter to the pediatric surgeon for further management of this patient. And then you can think about the learning outcomes for a fifth-year student. So if the student is supposed to write a referral letter to a pediatric surgeon about a patient suspected of acute appendicitis, so what information that student need to collect, and what information based on the history, on the physical examination, on the investigation, student would write in the referral letter. So here the task is writing a referral letter about that situation. So again, you can sit and think about what could be the possible learning outcomes from this task. So this is another example of a task-based learning. Right, so implementation of task-based learning. There are 8 aspects of implementing task-based learning. The first, determination of course learning outcomes. Second, specification of the tasks. Third, preparation of a grid starting learning outcomes for each task. Appraisal of the options for introducing task-based learning in the curriculum. Provision of learning opportunities. Determination of the role of staff in task-based learning. Development of study guides and organization of the student assessment. So these are the 8 steps. I will explain some of them in the coming slides. Specification of the tasks. Of course, the task, the student or trainee should have an access to the task. We cannot propose a task where students do not have access to that. It is pointless to select a task the student is unlikely to encounter and to which he or she cannot relate. Example like special procedures, where those things would not be applicable in undergraduate students. A task should provide a focus around which the student or trainee acquires the specific knowledge, skills, and attitudes in the areas of study. Now, the areas of study can be any discipline, community medicine or pediatrics or internal medicine. So in that area, the specific knowledge and skills in that particular area related to the task. A basic understanding of the topic, including the basic medical sciences. And third, generic or transferable skills, for example, communication skills or management skills. So one, the task should be easily accessible to the student. Second, task should provide a focus. So it should be stimulating enough for students to learn about the specific knowledge
about the basic medical sciences as well as the generic or transferable skills. It is important in implementing task-based learning to consider the context, whether we are talking about a hospital ward or we are talking about hospital outpatient department or in the community or in the practical laboratory or in clinical skill labs under simulated conditions. So it's important to decide about the context because the learning outcomes would differ in different situations. What is the criteria for selection of a task? The task deals with common problems in the community. That's important. The task provides the required knowledge, skills, and attitude based on the course learning outcomes, means whatever learning outcomes of that course or that posting, the task should be related to that. Otherwise, the students would not be really interested because it does not relate to the learning outcomes of the course. And the task provides integration of clinical and preclinical subjects. Use grids to match learning issues with tasks. In planning a course and preparing a coherent learning plan, it's often helpful to prepare a grid. I'll show you an example. These are very, very useful because these grids can give you a lot of information in just one glance. The grid makes clear how the task will meet the course learning outcomes. However, we know that some objectives or learning outcomes may be addressed through more than one task. Here is an example. These are the course learning outcomes, and here are the tasks, and this is how they match this. For example, the one course learning outcome is communicate effectively with patients and their family members, right? And then if the task is management of a child with acute gastroenteritis, of course, this communication would be exhibited through history taking, explanation of the clinical condition, explanation of suggested treatment plan, explanation of preventive aspects, and explanation of recognized complications. So these are the areas where the communication skills may be demonstrated, and this can be done in a task like management of child with acute gastroenteritis. On the other hand, if the learning outcomes are related to the procedures, for example, perform common procedures competently, and here we have given the example of a collection of the blood specimen. If I can reduce the size a bit. No. Here. Yeah, here. So here you can see that the learning outcomes of related to communication are very well addressed in the task like management of child with acute gastroenteritis, whereas with procedure is very well addressed in the task of collection of blood for culture sensitivity. So basically, having such grids where we have the course learning outcomes and the task and matching that which course learning outcomes are being met clearly with which task helps in just one glance to explain the whole curriculum. So such grids would be really, really useful if we want to implement the task-based learning.
right? Okay, now the next point, design a reliable and valid student assessment process. So what are the appropriate assessment processes or assessment methods which can be used in task-based learning? First, of course, any new approach to teaching and learning, assessment is critical, and same thing applies to task-based learning. The assessment process should reflect the objectives and content of the curriculum and the higher level objectives rather than only factual recall, and the students' application of theory to practice should be addressed. So aim is higher level objectives, which is more than simply recall, and actually is the application of knowledge, which is the main aim of assessment. And the best method are the performance-based assessment. For example, OSCE would be the best method of assessment of task-based learning sessions. Right now, how to conduct a task-based learning session? We can divide it into 3 parts: pre-task, during the task, and after the task. In pre-task, of course, the lecturer has to set the task and contextualize the topic, means inform the student how this task is related to their course or their curriculum. Has to raise the student interest and prepare learners to perform the task. So there needs to be a small session between the lecturer and the students, and where lecturers tell them about the task and the importance of the task, and tries to raise the students' interest and prepares them for the task. The teachers might need to help students with both content and scope. Teachers need to inform the students what kind of activity they need to perform and what kind of things they should anticipate when they are performing that type of activity, and what kind of resources they would need. And it is extremely important that students understand the objectives or learning outcomes of the task during that phase. Whereas in problem-based learning, that's not informed to the students, but in task-based learning, they are clearly informed about the expected learning outcomes. During the task, the brainstorming session among the students, same like in problem-based learning, identifying the learning needs and the resources required, exactly like PBL. Students work on the learning needs individually or in pairs, again, similar to problem-based learning. Students are supposed to perform the task in small groups or pairs and use their existing and newly acquired knowledge to perform the task. So this means that task-based learning may need more than one session. And when students finish performing the task, that's seeing the reflection. When students finish performing the task, they need to plan how they are going to report it to the rest of the class or the other members of their group. So they need to think about it, reflect upon it, and what they have learned from this task, and how they are going to apply this knowledge in other activities, and what are the areas related to this task they have learned. So all these things they need to reflect and then report. And after the task, the post is when students evaluate their performance. And this might be done by comparing the outcomes of the task to the other groups or other members of the same group. And it can also involve feedback provided by the teacher and the subsequent practice of performing the task.
For example, think about a group of 8 students and they are going to perform the task. So students divide themselves into 4 groups. So every 2 students perform their task, and when they come back, all the 8 students, then they present their findings and discuss with each other and the reflection. So that's how the post-task session would happen. Written reflection by the students included in their portfolio is a very important step of completing the task, because that is the real learning from the task. The advantages of task-based learning: the coaching role of trainers, strengthen trainer-student relationship. So if the relationship between the student and the teachers, they become better, and the learning environment is improved. Student performance is closely monitored and evaluated by the trainers, because this is a small group and so there's a close contact. The interdisciplinary approach, if it is interprofessional, that is excellent method of implementing interprofessional education, where the students from different disciplines are coming together, from nursing, for pharmacy, from dental, and maybe from the medical students. If they are performing one task together, so it would be a very good example of interprofessional education. I showed you this similar figure before, and the task-based learning would come here as practice doing, which is thought to be 75% chance of remembering. And if they are teaching others, they are sharing their experience, then it becomes 90%. Again, so it is much better than the other methods of teaching, like lectures, reading, or audiovisual, because the power of learning is very high, and chances of retention of knowledge is really, really high. However, there are some challenges which we need to face in task-based learning. Because it's mainly done by clinicians, and sometimes they may not be able to spare time for such tasks if they are scheduled in their training, because the emergency duties or emergency cases may make it impossible. And we need to prepare the staff repeatedly, conducting workshops to help the staff to understand the principles and implementation methods of task-based learning. So staff training is really, really important. And the examination, which is OSCE and, for example, multiple choice questions, they need to cover these tasks. So student must know that these tasks would be examined, and they should be the part of OSCE, so that helps students to learn more about it. सर, आपने Yes. स्टडी गाइड का जिक्र किया था टास्क बेस्ड लर्निंग में। अभी आपने कहा ना कि क्लिनिशियंस ऐसे बिजी होते हैं और इस तरह, तो ऐसा है कि आप टास्क, अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर करके आउटकम सारा कुछ लिख दिया है, तो स्टूडेंट्स उसको खुद लर्न करें और आप बाद में असेस कर ले, आप उनसे वीडियोस शेयर कर ले, अगर आप टाइम कॉन्स्ट्रेंट हैं या वीडियो इज अ गुड आइडिया। अदरवाइज टास्क बेस्ड का जो ड्यूरिंग द टास्क सेशन है, वो अंडर सुपरविजन होना चाहिए। हो गए, the facilitator would help. जी, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो इस जो है अल्टरनेट है कि स्टूडेंट्स वीडियो ले लें, लेकिन फिर एक सेशन में जो लेक्चरर है और स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे हों और वीडियो हो और उस पर डिस्कशन करें. सो दैट इज एन अल्टरनेट मेथड, बट द आइडियल वुड बी if it is जी. live, क्योंकि the lecturer can give immediate help or feedback. जी. So take home message: task-based learning supports the notion that learning in medicine can occur most effectively when related to the task undertaken by the health care profession.
In undergraduate education, task-based, it would bring both basic sciences and the clinical sciences together. It introduces relevance and application of theory to practice and provides a strategy for continuing a study of the basic sciences in the later years. So जिस तरह task based learning अगर preclinical years में है, so they would have some input of clinical knowledge. लेकिन अगर ये clinical years में है, so it would bring back the basic sciences. So students would be in touch with the basic sciences even in clinical years. In postgraduate education, task-based learning enhances the value of on-the-job learning because it is in the hospital, in the wards. And in continuing education, or CME, task-based learning can assist the doctor to build repertoires of skills, knowledge, and understanding. So it is useful in undergraduate, postgraduate, and continuous medical education. With that, I thank you for your attention. The only thing I want to share now is actually comparison of all the four methods which we have just discussed. The comparison in just sort of in a glance, right? I think I need to shorten this a bit. All right, now the PBL, the team-based learning, the task-based learning, and the case-based learning, and then the preparation of session, conduct of the session, also post-conduct and stages of training. So this table summarizes the whole thing which we have covered so far, and I have already with the TBL now, and we have this task-based learning and case-based learning. I think I will pass this document to the organizer. आप Zoom पे शेयर कर लें हमसे फाइल, ये वाला वर्ड वाला डॉक्यूमेंट, ये Zoom पे शेयर कर लें हमसे फाइल. I really don't know how to do it. सर चैट बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आएगा अटैचमेंट का, तो आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं. एक मिनट देखिए, ये मैं चैट में जाता हूँ. ओके, चैट में जाएं और फिर वहाँ क्या कहा आप, क्या देखूं मैं वहाँ? फॉर्मेट, स्क्रीनशॉट, फाइल को क्लिक करूं, राइट? फाइल और डॉक्टर अक्सा सर को हेल्प करें थोड़ी सी. फाइल पे क्लिक करें सर, और ये जो आपकी फाइल है वो अटैच हो जाएगी. अच्छा, फाइल पे ये, क्योंकि ये आगे दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, और यूर का, हाँ मैं कंप्यूटर में करता हूँ, सही है, कंप्यूटर में करके और फिर इधर से बंद कर. हाँ, मैं एक मिनट, मैं उस फोल्डर में जाता हूँ. और राइट, I think ये cannot be sent because it is currently in use. तो इसका मतलब है मैं बाद में आप इसे बंद करें ना सर, आपने भी हमारे लिए ये ओपन की हुई है. सर इसको क्लोज कीजिए, साथ वो फिर हो जाएगी शेयर. Right, okay, so I stop sharing. और आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी बंद करें. वर्ड डॉक्यूमेंट भी बंद करो. अच्छा, सही. Okay, now I अच्छा है आपने मुझे ये भी सिखा दिया. The student has now become the teacher. Of course.
टीचर सब कुछ स्टूडेंट से ही तो सीखते हैं। यही तो हमने लर्निंग पढ़ी है। ओहो, ये तो कुछ और खुल गया। ओके, नहीं सर कोई बात नहीं, ये बाद में डॉक्टर अक्सर के साथ शेयर कर लें सर प्लीज। मेरा ख्याल है हम ऐसा मैं उनके साथ शेयर कर लूंगा और वो आपसे सर शेयर श्योर कर श्योर देंगे। सर श्योर। Okay, now I थैंक यू think वेरी मच सर, इट वाज वंडरफुल। that brings us to the end of the session और exactly जिस टाइम पे खत्म होना चाहिए। Thank you very बहुत much, अच्छा sir. सेशन मुझे था, कहा गया Really? था आपका बहुत अच्छा सेशन। 5:30 से 8:30 2 मिनट है 8:30 होने में। सर आपसे मेरा जल्दी एक क्वेश्चन है जल्दी सर, से अगर आपने कहा टास्क बेस्ड लर्निंग में उनको कोई रीडिंग मटेरियल नहीं देना, अगर मैं उनको एक टास्क करा रही हूँ अगले दिन अपने जी। स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर, और उनको एक दिन पहले मैं लिंक शेयर कर लेती हूँ और वो थोड़े वेल प्रिपेयर्ड आते हैं, तो ये फिर टास्क बेस्ड लर्निंग नहीं रहेगी? नहीं, वो असल में चूंकि टास्क बेस्ड लर्निंग का बेसिस प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है कि उसमें इन दोनों में स्टूडेंट्स ऑन द स्पॉट जो है वो सीखेंगे और फिर हम वहां उसको पे टास्क वहां पे वो अपनी लर्निंग इश्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। इसका बेसिस जो पीबीएल है तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स को आप वहां पे वो अगर आप मटेरियल देंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या मटेरियल देना है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से आपसे लेंगे। जी जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, पहले तो सबसे पहले मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर facilitating this session. It's always a pleasure to listen to you, to learn from you, and to be advised and informed by your experiences. So thank you very much for this session, and we will continue to engage you in future sessions as well, and in our future learning experiences on behalf of the entire Agile Life team. सर आप इतनी तारीफ करते हैं कि बंदा शर्मिंदा हो जाता है। नहीं सर, तारीफ के काबिल हो तो सर तारीफ करनी पड़ती है ना सर। So on behalf of the fellowship program and the Agile Life team, sir, I really thank you, and I thank the participants. ये मैं आपको बता दूं सर, the most interesting thing is that I've been following this for the last this is the third day coming to the end, but it has actually come to the end. इतने participants किसी और session के अंदर नहीं हुए, so thank you very much for being an icon of medical education. एक आपने ज्यादती की है मुझे थके हुए स्टूडेंट दिए आपने। थके हुए दिए सर? कौन से वाले सर? हम कब थके हुए? हमने आपसे इतने क्वेश्चन किए। नहीं वो तो किए, लेकिन आई कैन इमेजिन के सर नहीं, हम थके हुए नहीं है सर, हम किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट हैं सर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के। आई एम सॉरी, मैं आपको उन मायनों में थके हुए नहीं कह रहा। मतलब आखिरी सेशन दिया है। मैं टायर्डनेस के बारे में कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा कि आप पंजाबी वाले थके हुए नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि बेसिकली कि एंड ऑफ द सेशन के अंदर लोग जब एग्जॉस्टेड थे और कॉग्निटिव लोड हो चुका था तो उस वक्त मौका दिया गया। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। बेसिकली मैं यूजुअली पूछता हूँ कि लेक्चर का बेस्ट टाइम क्या है। कोई सुबह कहता है, कोई आफ्टरनून कहता है, बट एक्चुअल फैक्ट इज के लेक्चर देने का कोई बेस्ट टाइम नहीं है। लेक्चर हमेशा बोरिंग होते हैं और स्लीपिंग होते हैं। सर वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप अभी बीमारी से वापस आए हैं और आपने इतना लॉन्ग सेशन दिया। We are grateful to you. It's honestly, it's really a pleasure if I can contribute, especially to students in Pakistan. That's really a pleasure. Thank you very much. डॉक्टर अक्सर तस्वीर ले लें ग्रुप, ताकि फिर जो है ना हम मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। स्पेशली जब करना नदीम साहब इतने हाई अप है जो स्क्रीन के ऊपर तस्वीरों के अंदर आ रहे हैं, तो सर वो थका हुआ मेरे बारे में कह रहे थे सर। नहीं सर, ये जो पीछे आपने जो गर्दन मेरी गई, अब मैं तो मुझे कोई उठाएगा तो उठ सकूंगा सर। हमारी बेल्ट तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी गायनी वालों ने उठाई है सर। ये क्या बात, गायनी वालों ने उठाए हुए जनाब? गायनी वालों ने हमारी बेल्ट उठाई है और हमारी लाज रखी है, वरना हम तो कब के सर। वैसे आपको गायनी वालों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सर, लेकिन हम आपको सर्जरी वालों की तरफ
तो डॉक्टर अक्सर तस्वीर खींच लीजिए एक, तो फिर हम आगे चले। डॉक्टर अक्सर मेरी तरह गाड़ी में ड्राइव कर रही है। अभी निकली हूँ मैं। डॉक्टर सारे आप पिक्चर ले सकती हैं या इधर से कुछ करूँ? आप ले लें। ले सकती हैं वो पिक्चर या स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए उसकी। सर आपने तो नहीं मैम, ये दीवार और मेरी गर्दन के दरमियान पिलो है, मैं उसको दबा रहा हूँ और इसकी वजह से जागा हुआ हूँ, वगैरह मैं तो गुम हूँ। ये छोटू सा ये सर, देखिए, तो छोटू सा। आपकी सारी कोशिश ये है कि तकिया ना गिरे। हाँ हाँ सर, असल में जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इस दफा हमने पिक्चर के बजाय एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप सबकी हंसते खेलते मुस्कुराते, and thank you for that. So you can carry on with the session. We're done. All right. Thank you very much, everybody. Be careful, you are driving. Just a little advertisement. हम जो है वेबिनार करते हैं मंथली. I think जुनैद साहब उससे वाकिफ हैं. So if you are interested, so you can always join. It's usually 3rd or 4th Sunday of the month. सर हमने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है आपका। राइट, आज सुबह आज जो सेशन था वो था रूब्रिक्स पे और मार्किंग स्कीम्स पर। डॉक्टर कुरतुलैन हमें भी बताइएगा। सर मैंने अच्छा, मैं जुनैद साहब को अभी देखा है, तो जुनैद साहब आप तो जवानी की तरफ आ गए। नहीं तो गाड़ी बिक जाएगी, मुझे लग रहा है जो बिक रही है। गाड़ी बिकने दे, कोई बात नहीं। ठीक है डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर कुछ या आप भी आ जाएं। डॉक्टर सारिया, विल यू बी एबल टू? अच्छा मैं डॉक्टर सारिया को एक सेकंड एक टेक्स्ट कर दो। चलिए कर लें डॉक्टर अक्सर जल्दी से। यस जस्ट 1 सेकंड जाना है और फिर सब 1 सेकंड। अब आप हंसेंगे नहीं, हंसे खेले मुस्कुराएं सब। 1 2 3 वीडियो स्टार्ट हो गई है। आप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 1 मिनट चल रही है। वेल डन, हंसे खेले सब। वेल डन। हंस तो सकते हैं, खेलने का इस उम्र में क्या खेले। ओहो जस्ट 1 सेकंड ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। If you have had now, if you are still laughing, that